In the last class, we had discussion about how to prepare this science and technology. And we also talked about one topic, that is virus. Last class, we had a kind of open house session where everybody wanted to speak, right? But today onwards, I'll speak, right? But again, after the class, I'll stay because this is the last class of the day. So whatever query and question that you have, that you can always ask after the class, right? I'll stay here only for 5, 10, 20, 30 minutes, whatever time you want, right? You can simply come and you can ask your queries, right? So that we can have a direction that whatever I want to convey, I can convey. And at the same time, you will also have something in your copy in the form of notes, right? Second thing, in science and technology, or let's say any kinds of science, you can never say that if something happened like this, because science is nothing like if something happened like this. You get my point? Science is not philosophy. Science is not, let's say, a kind of, any humanity subject where different theory and different philosophy can exist parallelly. Normally, when we talk about political thinkers and all, then there is different thinker who think of a particular thing in a different way. In science, there is nothing like that. In science, it's a Newton's law, that be Newton's law. Everybody that is being pulled toward the center of the earth, that means that is the only thing. No matter how innovative you go, you will always go wrong with that. The center, अगर आप अर्थ अपने सेंटर पे खींच रही, सेंटर पे खींचेगी. अब आप जो कर लो वो दाएं बाएं नहीं खींच रही. So there should not be any parallel thinking. Everything is basically verified by scientific, experiments and scientific derivations. तो जो भी बात करेंगे वो scientific nature का है. Anyway, so today we are going to discuss a topic because obviously we are trying to cover the basic concept so that we can start our next topic, that is called biotech. So we started biotech. In the last class, we had a discussion about living, non-living, virus, and how viruses are considered as a connecting link between living and non-living. Today, we are going to discuss about, in the second class, cell, right? Cell. And not only cell, rather we'll discuss cell as well as DNA and RNA. In the last class, we had something about DNA, RNA, and we considered that DNA, RNA is nothing, but it's a kind of blueprint. On this blueprint, everything is written, and according to this written information, we have developed the characteristics in our body. Like our hair is curly because DNA has got information for that. Somebody's hair is straight because DNA has got information for that. Somebody's hair is black, it means DNA has got a particular information for that. If the hair is brown, DNA is having the information, right? Even if there is no hair, DNA is having information for that, right? So we'll try to explore that how these informations are written in the DNA and how this DNA information are executed. Then we'll also talk about that what is the difference between DNA, gene, chromosome, chromatin. These are the different name of a single thing. And then we'll try to differentiate and look for the similarity into it, right? But first of all, you know that cell is nothing, but it's a structural and functional unit of life. That is why it is called fundamental unit. So cell is what? It is called fundamental unit of life. That means everything in this life format is made up of cell, or we can call it, it is structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life, right? We are not going into the definition part, obviously, but one thing we know that every single living organism is made up of cell. It's simple, no cell, no life. In the last class, we have discussed about it, that virus don't have cell, that is why it is considered non-living. And whenever virus is showing the sign of life, the virus need to have some cell. And for that, virus hijack the cell of the host. Host means the body on which the virus is attacked, right?
So all the life forms, all life forms are made up of cell or cells. So there could be single cellular organism, unicellular, like bacteria is unicellular, amoeba is one cell, and there could be multicellular, like human being, like animal, like plants, right? But no matter which life form you talk about, it is made up of cell. Now the thing is that what exactly is there inside the cell, right? So for that we have to look into the structure of cell, right? Let's make a structure. This is animal cell, and this animal cell will have a nucleus, right? This is mitochondria. This is something called endoplasmic reticulum, right? On endoplasmic reticulum, there is something attached to it that is called ribosome. Ribosome can be present outside also. There is something called Golgi body. So this is Golgi body. So this much at least we should know, right? Moreover, this entire cell has got a liquid inside. It is filled with a water-like substance that is called cytoplasm, right? So this is important. This is called plasma membrane. Plasma membrane. Plasma membrane is cover of the cell. It's like balloon holding water. So a balloon is holding water. So balloon surface is what? Plasma membrane, and the water contained inside balloon is basically your liquid inside. A liquid present inside. This liquid which are present inside, it is called cytoplasm. That is liquid part, right? So plasma membrane is like balloon, and this is like cytoplasm is like liquid part, right? Besides, you know that this one is known as mitochondria. This is mitochondria. It is also known as powerhouse of the cell. Because it will produce energy. That is why it is powerhouse, right? We know about it. This is called, this one is known as, this is your endoplasmic reticulum. That is called endoplasmic reticulum. We can call it ER, right? ER. So either you call it endoplasmic reticulum or ER. And you can see like ER is attached to ribosome. So this red part, I'll make it like this. This is called ribosome. So I'll tell you only those things which are required. We won't go for the extra one. So endoplasmic reticulum is having ribosome. Ribosome is attached to it. Sometimes ribosome is not attached to it also. You can see like in endoplasmic reticulum, one part which is holding ribosome, the other part is not holding ribosome. So if endoplasmic reticulum is with ribosome, then it is known as rough ER. What we call it? Rough ER. Why it is called rough ER? Because it will look rough in that way. If you look at the microscope, and then if you look through the microscope and there are tiny ribosome attached to the ER surface, then it is going to be little rough in appearance. So rough means ribosome attached. And if ribosome is not attached, it will be smooth ER. So this is what? Another one, without ribosome. And when it is without ribosome, then it is called smooth ER. Smooth ER. Got it? Now we have left with only one thing, and that is this one. This is called Golgi body. Right. Golgi body.
At least this much you should. I'm not talking about the other cell organelle like lysosome, centrosome, वो सब छोड़ दीजिए. To understand the biotechnology, you need to understand about at least these organelle. Although there are many other organelles in the cell, what we have left in the cell organelle, lysosome, that is called suicide bag of the cell. We'll talk about it somewhere else. Centrosome, that is for cell division, we are not talking about those. In the last class, I told you that this nucleus is known as control room of the cell. What is that? Control room of the cell. And this is what? Nucleus. Nucleus. And why nucleus is control room? Because it contains DNA. It is having DNA. Right? It is having DNA. Powerhouse, control room, and everything else is there. Cell is like a setup. It's like a company. It's like a factory, you know. Like let's say we have Maruti Udyog Limited. It's a big company of India which manufactures different type of car. Compare the cell with any big company who is making car, right? Then the company is working under control of a person that is called CMD, Chairman or Managing Director or CEO, right? So entire company is under control of one person, and that person holds the highest position in the company, that is called CEO. Similar kind of thing is there. Nucleus and DNA is CEO. Nucleus is a chamber of CEO. Inside this chamber there is DNA, and DNA is basically CEO. Whatever command that is needed for the cell to function, that command would come from where? Nucleus. DNA will give the command. Let's think hypothetically that Maruti Udyog Limited is making different type of car. So CEO is the most important person, and CEO is very securely sitting inside a chamber. I mean, if you go to any company, you will find that CEO chamber is, it's all together in a different building with a high level of security. It's very difficult to get into the CEO chamber unless you have a proper appointment. And you rarely see CEO moving around. They are always in their chamber. मतलब कब आए कब गए पता ही नहीं चलता. Securely they will come, they will stay, they will command, and they will go. So Maruti Udyog Limited is making different type of car, but be sure that CEO is not involved in manufacturing of the car directly. क्या CEO कभी काम करेगा जाके उधर? नहीं. But CEO has got all the copy, all the blueprint of the car. Whatever car is being manufactured, CEO laptop or CEO desktop will have blueprint of it. I mean, all the information of car making is available with CEO. Even paint, steering wheel, seat, engine, every single thing, the details are there with the CEO. That is what the DNA is. I mean, this DNA is not going out. DNA can never go out. DNA will stay there in the nucleus itself. But whatever happening in this cell, and we are made up of cells only. So we can say like whatever happening in our body, that is basically written on the DNA. Our cells are functioning, that is why we are functioning. My function, whatever I am doing right now, it is nothing but the collective functioning of the cell. If collectively cells are functioning, then my hands are moving, the muscle cells are functioning. And how my muscle cell will function, that is depend upon what is there inside the nucleus of the muscle cell. So whether you say cell or body, it's the same thing, right? If I say that the entire activity of the cell is under command of nucleus, that is true. And if I say that entire activity of the body is under command of the cell's nucleus, that is also true, because we are made up of what? Cells. So whatever happening over here, that is under command of the nucleus. And how nucleus is commanding? Because DNA has got the information, that is a blueprint. That is why it is called control room of the cell. And these are what? These all things, mitochondria, Golgi body, ribosome, endoplasmic reticulum. These are the different segment and departments of the company. If you are manufacturing car,
then there would be one setup that will be manufacturing what? Wheels. One setup manufacturing seat. One setup that is manufacturing engine, and then all the things put together will create a car. Similarly, these are the different setup. Mitochondria is giving energy. It is giving energy to function the entire thing. Ribosome is for protein synthesis. Ribosome is what? Protein synthesis. That is very important to understand. The function of ribosome is what? To protein synthesis. That is the most important part. Because our body is made up of what? Protein only. So the function of ribosome is to protein synthesis. But ribosome will synthesize protein under command of nucleus or DNA. Let's nucleus and DNA be synonyms. It's a synonym. Ribosome is a kind of machine. Ribosome is a kind of machine that can produce and develop different kind of proteins. Ribosome is fairly like mixer and grinder that we use in our household. और उसमें क्या बनाते हैं हम? मसाले पीसते हैं. बट मिक्सर ग्राइंडर में मसाले किसके हिसाब से पीसे जाएंगे? मम्मी या पापा के हिसाब से. जो लोग खाना बना रहे हैं, they will give command कि ये वाला पीसो, तो वो पीस के निकालेगा. Similarly, ribosome is like protein making machine, and this machine will function only when the machine is getting command from DNA. So what kind of protein we are going to make? That will be commanded by DNA and it will be manufactured by ribosome. You got it? But ribosome is a machine. Ribosome is like mixer and grinder. Ribosome cannot make protein unless it is installed on some surface. कहीं तो install करना पड़ेगा. हवा में तो नहीं टांग सकते. So endoplasmic reticulum is the membranous structure. It's a structure which gives surface to the ribosome. Whenever ribosome has to make protein, it will come attached with endoplasmic reticulum, and after that it will start making protein. You get my point? So protein will be manufactured only when the ribosome is attached to the endoplasmic reticulum. You got my point? Sometimes it attaches, sometimes it doesn't attach. That is why we say that function of ribosome, I'll take another board. Let's say, if we talk about function of ribosome is what? Protein synthesis. And ribosome attached to what? That makes rough ER. What is the function of rough ER then? Protein synthesis. है ना? Because places function is the function which is going on. अभी देखो ये इतना बड़ा एरिया है, इस पे चेयर है, आप बैठे हो, मैं हूं, बोर्ड है, and now you can say like this is classroom. You can say like first floor of this building is classroom. You get it? Now let's say अगर ये सारे चेयर हट जाए और यहाँ पे सिलाई मशीन लगा दे और यहाँ डेनिम सिलने लगे हम, तो क्या बोलेंगे कल से? डेनिम बनाने की फैक्ट्री है, ये बोलेंगे ना. जैसी मशीन वैसा उसका काम. तो रफ ईयर का भी काम क्या है? रफ ईयर इज ऑलवेज अटैच्ड विद राइबोसोम, सो दैट इज आल्सो हेल्प्स इन protein synthesis, because you know that rough ER is with ribosome. So machine work is protein synthesis and machine is installed on ER, and that ER part is known as rough ER. So the function of rough ER is also protein synthesis. But then there is another one that is called smooth ER. Smooth ER will do lipid synthesis. Lipid is what? Fat synthesis. We do fat synthesis as well. हम fat synthesis भी करते हैं. Body बनाता है. I mean, when you wake up in the morning, तो आपके चेहरे पे आप देखते हैं ना ऑयल्स आ जाते हैं. तो कहां से आया? वो जो खाया वो निकल गया या बॉडी ने मैन्युफैक्चर किया? Cell can do it. There are glands on the skin that is called oil gland, sebaceous gland, and this gland will secrete some amount of oil throughout the day and night, so that our skin remains supple and skin remains soft. That is a natural way. Normally दिन में हम पोंछ लेते हैं, धो लेते हैं. रात में तो फिर 6, 7 hours, 8 hours you don't do anything. So that is how it appears. So we do make lipid in our body, but we make protein
more than lipid. So ज्यादा क्या बनाते होंगे बॉडी में, लिपिड या प्रोटीन? प्रोटीन. Because in the last class I told you that each and every structure in our body is made up of protein, and all the function that we do in our body is catalyzed by protein enzymes, because all enzymes are protein. Now ribosome is protein synthesis. Rough ER is a place where ribosome is installed. So rough ER is protein synthesis. Some amount of lipid will be made. लेकिन फैक्ट्री का काम तो हो गया. ये तीनों काम किसके कमांड में हो रहा है? Who is giving command? DNA or let's say nucleus, because that's the CEO. अब एक बात बताओ, if you have a factory, if you have manufactured something, manufacturing is not the only work. After manufacturing, you have to do post production processing, है ना? And what is post production processing? Storage, modification, packaging and delivery. यही तो करोगे. Whatever you make, you will first store it, then you will modify it by putting stickers, labels and everything. And after modification, you will package it, and then after packaging, you will deliver it. Golgi body does the same thing. What is the role of Golgi body? Golgi body. The role is storage, modification, packaging, and delivery of protein, and then lipid also. But lipid why in bracket? Because protein is always more in quantity. So as simple as this. Cell is important only to understand biotechnology, right? So Golgi body is doing post-production processing. Factory are what? Rough ER and smooth ER. Rough and smooth ER is our factory. Rough ER is a factory which can produce protein. Smooth ER is a factory which can produce lipid. The machine that is installed in the factory to produce protein is called ribosome. So machine which can produce protein and that is installed on the ER, that is called ribosome. So machine is ribosome. Factory where the machine is installed is called rough ER. Both function is protein synthesis, and there are another factory which can produce lipid. But whatever they produce, that must undergo post-production processing, and that will be done by what? Storage, modification, packaging, delivery, and that is Golgi body. I'll give you one example. Oils come out over the face. आता है? कहाँ से आता है? So our cell, inside the cell, DNA is giving instruction to smooth ER. Smooth ER is making some amount of oil, each and every cell is making, and then this small amount of oil is getting deposited in Golgi body. Golgi body के पास क्या हो गया? Deposit हो गया. And Golgi body is now releasing it outside the cell. The moment it releases outside the cell, it will appear over the skin. You got my point? Let's say you all know that when we eat something, so after eating something, our stomach is going to release different type of enzyme. Our intestine is going to release different type of enzyme. Like I told you, all enzymes are protein. So technically the enzymes that is there to digest our food is what? Protein. आप सोचो प्रोटीन जैसे आया, क्या सोचना है? किसने बनाया होगा? राइबोसोम ने. एकदम क्लियर थिंकिंग रखनी है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ राइबोसोम. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. बस राइबोसोम ने बनाया. राइबोसोम कौन है? मशीन है. कहां इंस्टॉल्ड है? रफ ईआर पे है. किसके कमांड में बना रहा है? डीएनए के कमांड में बना रहा है. और गोल्जी बॉडी इज स्टोरिंग ऑल द प्रोटीन, एंड देन व्हेन वी ईट, at that time Golgi body will release it. You got my point? How it will release? I'll show you with the diagram. Let's say this is a cell. This is nucleus. Nucleus is giving command. Command is there with ER. This is what? ER. And on the ER, this is what? Ribosome. So this is ribosome. Ribosome has developed some protein. ये देखो प्रोटीन है. ये प्रोटीन है. These are the protein, and this all protein got stored in something called Golgi body. So this is Golgi body. This structure is what? Golgi body. ये सब प्रोटीन के बबल्स हैं. इसके अंदर भरा हुआ क्या है? It is filled with nothing
but protein. It is having protein only. So this is your Golgi body. Command is coming from what? Where? DNA. So let's DNA or nucleus. Under this command, ER and ribosome is making protein. This protein is getting inside the Golgi body. वो ऐसे ही पड़ा हुआ है. Now what will happen? Whenever a time would come where we have to deliver, so this will come here. This is filled with what? It is made up of protein, and then it will merge with what? This part, and it will break off. यहाँ पे क्या होगा वो? Break off करेगा, and then all the protein that will be released outside. So this is protein or lipid that has been released outside. You get it? So now you imagine that our stomach is like a bag-like structure. Let's consider this room as a stomach. ये room क्या है? Stomach. Like this room has got a wall. We also have a stomach wall from all part. This room wall has got bricks, isn't it? Bricks. Now consider that stomach wall is made up of bricks, and that brick is known as cell. Like this wall is made up of bricks, the stomach wall is made up of cell. And this activity is going on where? It is going on inside the cell. And each and every cell of the stomach is releasing a small amount of protein outside. सोचो अगर इस कमरे के सभी दीवारों में से एक एक बूंद अगर लिक्विड बाहर आने लगे तो फिर तो कई लीटर पानी इसके अंदर आ जाएगा. And that is how we secrete enzyme inside our body. That is how we secrete hormone inside our body. That is how this sweat is secreted outside the body. Inside या outside secretion ही तो हो रहा है. And who is responsible for that? इसी को क्या कहेंगे आप? Now this is storage, modification, and this is what? Delivery. Now it is outside or inside. So this is the functionality of a cell. As simple as this. Ribosome is machine which makes protein. Rough ER is factory where the machine is installed. A small ER is another factory which can synthesize lipid. And whatever lipid and protein which has been synthesized, that will get stored, modified, packaged and delivered by what? Golgi body. That is how the factory function. किसी भी फैक्ट्री में इतना सेटअप तो होता ही है कि एक सीईओ है, कमांड दे रहा है, वो कभी बाहर नहीं आ रहा, right? Then factories and machines are there, they are functioning under guidance of CEO. After production, you have to keep all the products at a safe place. That safe place is Golgi body, and from there only you will deliver when the demand is there. That is how our cell function, right? That is the basic functionality. Now we'll come to the most important part, and that is how this DNA and RNA is playing the role into it. How this DNA is doing everything that I told you. That means information are written into the DNA. यहाँ पे है. So for that, we are going to the next part, and the next part we are going to discuss structure of nucleus. So we are focusing on just required part, structure of a nucleus, right? Again a cell, this is nucleus, this is what? Mitochondria. Now I am making only two, nucleus and mitochondria. This is mitochondria and this is nucleus. I tell you one thing, the DNA is present at both these two places, right? Nucleus will have DNA, and that is called nuclear DNA. What we call it? Nuclear DNA. ये बहुत सारे हैं. Amount is very large, but you should not be mistaken that only nucleus has DNA. Rather, mitochondria also has DNA. So this is mitochondria. This will also have DNA. Very small amount. That is called mDNA. What we call it? mDNA. So now you tell me, in human body, where do you find DNA in cell?
only nucleus, only mitochondria or both? Both. This will come handy. Biotech में इसका reference आएगा. So be sure that in our cell, nucleus is having DNA, right? So 99.9% DNA is there with the nucleus. So here I can write कितना amount है इसका? 99.9%. But 0.1% DNA is also there with mitochondria. You get my point? Mitochondria is also having small fraction of DNA. DNA means what? DNA means DNA has command, and according to this command, function will go on. It means mitochondria is having its own DNA. So mitochondria is having its own command. So is mitochondria under nucleus or it is independent of nucleus? नहीं, ऐसा नहीं है. वो सेमी इंडिपेंडेंट है. पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, सेमी ऑटोनोमस. इंडिया में सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है ना? State is not free of the central authority, but state do have many authority which are totally free. Law and order state का तो होता है ना. Law and order state का होता है, उसमें सेंटर का कुछ नहीं है खास. Yes, home ministry will interfere when something goes beyond the control. But taxation में किसका ज्यादा से? सेंटर का. So that is called semi-autonomous status of the state of India. You get my point? Similar kind of thing is there. 99.9% nucleus, I mean DNA is present in nucleus. So this is supreme authority. It's like center government. But mitochondria do have 0.1% DNA, that is especially known as mDNA. And that give mitochondria a status where mitochondria is half independent, half dependent, right? And that is why mitochondria is known as semi-autonomous cell organelle. What is that? Semi-autonomous cell organelle. You can relate with that because you are having your own command. जैसे अभी आप दिल्ली में रह रहे हो ना, तो आप भी सेमी ऑटोनोमस हो, है ना? You are not fully autonomous. राइट, मेनी ऑफ यू में बी, जो आप हमारे यहाँ हम ऑटोनोमस होंगे या सेमी ऑटोनोमस होंगे या टोटली नॉन ऑटोनोमस होंगे, वो डिपेंड होता है कि हम अर्न कर रहे हैं कि नहीं. इफ यू आर इन जॉब, यू आर सेमी, आई मीन यू आर फुली ऑटोनोमस, है ना? अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो यू आर सेमी ऑटोनोमस, है ना? क्योंकि मेन फिनांस तो वहीं से आ रहा है. रिचार्ज इज बीइंग डन एवरी मंथ, राइट? But at the same time you have attained some degree of autonomy, क्योंकि अब ये नहीं कहना कि कहां जा रहे हैं. घर पे कितना लाइफ खराब था, है ना? The moment you step out, मम्मी पापा कहां जा रहे हो, है ना? अभी दिल्ली में एकदम सिंपल है. कहां जा रहे हो? सिंपल, क्लास. जा कहीं रहे हो, लेकिन कहां जा रहे हो? क्लास. अभी क्लास टेस्ट है, इस टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास. You get my point? So that is a degree of autonomy you have got it, right? But still you know कि ज्यादा क्लास करने की जरूरत नहीं है, because they are also, you know, पेरेंट्स को हम हमेशा मान लेते कि पेरेंट को क्या समझ में आएगा, जैसे मेरा बेटा भी मानता है. लेकिन उसको नहीं पता कि पेरेंट भी बच्चे थे और ऐसे करके ग्रो किए. तो पेरेंट इग्नोर इट, दे नो इट, क्योंकि उनको पता है, दे हैव आल्सो डन द सेम थिंग ना. सो दे नो द प्रोग्रेशन, right? So that is how we are, I mean you are semi-autonomous. Semi-autonomous means in some way you are totally independent, where you are going, where you are coming, but there are certain things that is being commanded by the central authority. So mitochondria is semi-autonomous, nucleus is fully autonomous, it doesn't have to do anything and depending upon anybody, right? So that should be there. We'll talk about mitochondria later. Now let's focus on nucleus. Let's take this nucleus out. So this is nucleus. Nucleus look like this. It's a membrane structure, and inside the nucleus you will find there is entangled thread-like structure, right? And this entangled thread-like structure that will be there submerged
floating in a dense liquid. So first of all, this is our nucleus. Whether it is plant or animal doesn't make any difference. Plant and animal nucleus are same. This is nuclear membrane. Nuclear membrane, which is basically CO chamber with gates, but gates are regulated. Nobody can enter, right? This liquid part is known as nucleoplasm. That is liquid. It is non-essential thing, but because I have made it, so I'll write it. And the most important thing that you can talk about is this. ये क्या है? ये entangled thread क्या है? ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इसको हम डीएनए नहीं कहते, इसको कहते हैं क्रोमेटीन. व्हाट वी कॉल इट? क्रोमेटीन मटेरियल. व्हाट वी कॉल इट? Chromatin material. So from this point we are now understanding everything. Now you have to listen very carefully and try to understand it. So in a cell, this entangled thread like a structure that we see in nucleus is called chromatin network, chromatin material, or you can simply say chromatin, right? But you will be, thinking that till date we talked about DNA, all of a sudden chromatin kaise aa gaya? So let's look into the chromatin composition. Chromatin is made up of two things. One is DNA and another is called histone protein. What is that? Histone protein. अभी देखो हमारे बॉडी में सब कुछ प्रोटीन का ही बना हुआ है. So DNA and histone protein, right? Now the thing is that if inside the nucleus, inside nucleus there are two things, DNA and histone protein, then why did we talk about only DNA? Why did we ignore histone? It's just because histone of mine and histone of yours is same. There is no difference in histone. What make me myself and you yourself is DNA. राइट? अब डीएनए हिस्टोन कैसे समझेंगे? तो डीएनए इज द इंफॉर्मेशन, हिस्टोन इज समथिंग विच इज कॉल्ड लैमिनेशन. जैसे कि आपका मार्कशीट है एंड सर्टिफिकेट्स है. नाउ टू पीपल मार्कशीट कैन नेवर मैच विद ईच अदर. ऐसा हो सकता है कि दुनिया के दो लोग उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट मैच कर जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता. कुछ तो चेंज होगा. नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, रोल नंबर, सब्जेक्ट नंबर. चेंज इज इनएविटेबल. Similarly, no two people's DNA can ever 100% be same, right? So marksheets of all of us are very different from each other. They may be very similar. Let's say you and I did our graduation in the same subject, in same department, in same college, and luckily we got the very similar marks, but still there will be difference. My name, your name, father's name, address. So sometimes similarity could be very much, sometimes it could be very contrasting, but yes, DNA is like that only. So your marksheet and certificate is DNA, and to secure the data written onto this marksheet and certificate, what you do? You put a lamination over there. Now lamination of mine certificate and lamination of your certificate, is it different or same? It's same. Lamination is not going to make any difference. What make difference is सर्टिफिकेट, मार्कशीट. चलो अगर एक लैमिनेटेड चीजों को मैंने आपके सामने रखा है, दैट इज द लैमिनेटेड सर्टिफिकेट आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू लुक इनटू द डेटा, इजंट इट? आप डेटा देखते हो, आप लैमिनेशन तो देखते भी नहीं, इग्नोर करते हो. सिमिलरली वेन एवर वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस, वी इग्नोर द हिस्टोन प्रोटीन. व्हाई डू वी इग्नोर? मैथ्स में इसी को कहते हैं कॉमन ले लेना. सबके पास है ना, कॉमन ले लो, हटाओ इसको. एंड वी टॉक अबाउट ओनली डीएनए. यू गेट माय पॉइंट? सो दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, कोई अगर ये पूछ दिया आपसे कि इन न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर प्रेजेंट, डीएनए और क्रोमेटिन, सो राइट आंसर विल व्हाट? क्रोमेटिन. डीएनए इज नेवर प्रेजेंट अलोन. डीएनए इज ऑलवेज सिक्योर्ड बाय हिस्टोन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन. आप इमेजिन कर लो कि डीएनए एक थ्रेड के जैसा है और पतंग उड़ाया आपने,
और उस थ्रेड को सिक्योर करने के लिए क्या लगाते हैं? मांझा. सो मांझा क्या है? स्टोन है. लेकिन मेनली जो मेन एसेट है वो तो थ्रेड ही है ना. ओनली मांझा डज इट मेक, कि मांझा से पतंग उड़ा लोगे सिर्फ? मांझा इज पाउडर. अनलेस यू हैव thread, you won't be able to do it. So stone is like manja, which basically make the thread stronger, stable, and thread is basically what? It's our DNA. So what we say, we can simply say one thing, that this DNA is genetic material. What we call it? Genetic material. And this RNA is what? Sorry, RNA, stone is what? Non-genetic material. Non-genetic material. You got it? It is non-genetic material. Genetic, non-genetic. And obviously, if it is non-genetic and it is same in everybody, then there is no point talking about it. So in a normal understanding, if we say that inside the nucleus, we have DNA, which has got the blueprint or command or information, and on the basis of that command and information, our body function, it's a true statement. But if somebody explores that what is there inside the nucleus, then DNA is not a right answer. The answer is chromatin. DNA कभी naked नहीं होता. DNA is हमेशा cover होता है किससे? Stone से. But stone make no sense. होगा सब में है. You are going for a job, you are, presenting your certificate. So the interviewer is looking into the data of the certificate. All the interviewer is having your certificate and lamination both. लेकिन उसको मतलब किस चीज से? डेटा से. ऐसा तो नहीं होगा कि lamination is very good, he got impressed by lamination. Is such a good lamination never seen in my life. Right? Job is yours because of the lamination. Because lamination is same. You get my point? So let's forget the stone protein. बस ये याद रखना है. Inside the nucleus, DNA is never alone. It is always there with the chromatin. So let's remove the histone. So after you remove the histone, what you got? You got DNA. ये देखो DNA. What is that? DNA. Now mentally, although it is not possible, but mentally we removed histone and we are now talking about only DNA. मतलब histone को common ले लिया हुआ है, side में रखा हुआ है. You get my point? Now let's say there is a term called gene. What is gene? So gene is nothing but the segment of DNA. Let's say this is a segment. I am marking it by red. So this segment of DNA is gene. Gene is a segment of DNA which has a particular information for a particular character in the body. Let's say one character I am telling you, blue eye, right? Somebody has blue eyes and eye will be blue because there will be a gene responsible for it. My eye is black, your eye is black, somebody's eye is brown, just because we have gene for that. For each and every character we have some gene. You got my point? And these genes are what? These genes are nothing but the part of DNA, segment of DNA. Segments of DNA are known as gene. And one gene will have information for one character. You get my point? And I'll tell you that in the entire DNA thread, from start to end, there are 30,000 such segments. How many? Approximately 30,000. It means that in my cell, how many genes are present? 30,000. In your cell, 30,000. And where these genes are present? It's the DNA. Now, I'll give you another analogy. मार्केट में थ्रेड आप देखते हो ना, थ्रेड, इमेजिन करो एक थ्रेड है आपके पास, बहुत लंबा सा थ्रेड है, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनर थ्रेड. हैव यू सीन डिजाइनर थ्रेड? जिसमें कलर्स चेंज होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक. सो you are having a long thread. So one end to other end, this entire thread is DNA. Thread with manja is chromatin, but हमने manja तो हटा दिया. So entire length of the thread is DNA, and the different color segment on this thread is basically what? Genes. You got my point? So genes are nothing but a segment of DNA. That should be there. Gene is a very common term that we use right now.
in the normal day-to-day life also, genes are being used very commonly. हम सब कह देते हैं ना, जैसे कोई किसी ने कहा कि अरे your hair is curly, then simply say that yes, my mother's hair is curly and I got the gene from my mother. It's so, I mean, literature में use करने लगे अब हम इसको कि I got a gene from there, and it's true. कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं. And that exactly happened. If your mother's hair is curly and you got a curly hair, it means that that segment of DNA came from mother in your body through ovum, through egg, or maybe from father through a sperm. We'll discuss about it. And that is how genes has came up in my body. Father has given gene, mother has given gene, and then genetic combination of mine has developed, and I got character half from father, half from mother. Right? So basically what I'm getting from my parents, it's gene. And what is gene? It's a segment of DNA. तो अगर कोई कहे कि I got DNA from my father or I got a gene from my father, it's the same thing. The entire length is gene, one small particular part, entire length is DNA, one particular part is gene. You got it? Now that there is another term that is called chromosome. Chromosome क्या है उसको देखते हैं. Now this is, I'm writing, this is gene, right? Now what will happen? How chromosome will form? This DNA will coil with histone. Histone तो है ही ना हमेशा. So with histone, and it is coiling. Coiling means condensing. So now it is condensing like this. ये पहले condense हुआ. अभी देखो condense हुआ तो ये वाला part कहीं यहां पे दिखेगा ना, यहां पे is the gene, same gene. Now it has condensed even finer, थोड़ा और condense हो गया. So now it is condensed like this, right? And this part is here now, and now it has condensed even more. तो ये condense हो गया ऐसे, देख रहे हो? Now it has got a fixed shape like a structure, and here you will find the same gene as a dot. You get my point? So this is structure after condensation, that is what? Chromosome. What is that? Chromosome. अब आप बताओ chromosome क्या है? It's a condensed DNA along with histone. यानी chromatin condense कर जाएगा तो क्या बनाएगा? Chromosome बनाएगा. Now I'm giving you two statement. आप verify करोगे सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं. One, gene is segment of DNA. Genes are located on the chromosome. True? Genes are located on the chromosome. So one gene has two concepts. One is genes are segment of DNA. मतलब thread अगर open है तो colors क्या है? Segments है. लेकिन मार्केट में thread open तो नहीं मिलता ना आपको. Thread is always there in a coiled condition. That is called rill. On the particular, plastic pipe, they basically condense and coil the thread to make a proper shaped reel, and you get reel, right? Now whatever color that you see and that thread, red, green, blue, yellow, black, all this color will appear on the reel also. Like what? Points and dots. You get my point? So DNA is open thread. In this open thread, genes are what? Segments. But once the DNA along with histone protein coil to form chromosome, that same genes are located on the chromosome at different location. So this DNA is having 30,000 genes arranged on it, right? This segment may be very short, very large. It's not like in a fixed thing. Maybe the other gene is very small. Maybe the other gene is double of its size. So size of the gene is variable. We don't know about it. But total number of such segment would be how many? 30,000. And if this DNA get coils, then it will form chromosome. And on this chromosome, this is what? Gene. So genes are located on the chromosome. It's the same thing. है कि नहीं? अब आप देखो, just take a pause of 30 seconds and then think and remind your mind. हमने चार चीजें पढ़ी. Chromatin material, DNA, gene and chromosome. You have to think कि सब में differences क्या है और similarity क्या है. पहली बात कि सब similar है.
These are just different name of genetic material. Chromatin material is present inside the nucleus where histone, protein and DNA present together. For the sake of understanding and study, we remove histone mentally. ऐसे हिस्टोन कभी हटा नहीं सकते आप, हम मेंटली उसको हटा देते हैं, and then whatever left is called DNA because codes are written onto the DNA. Now segments of the DNA which is having a particular code for a particular character is known as gene. And when this DNA coils along with histone protein, then it creates a fixed structure, and that fixed structure is known as chromosome. Genes are segment of the DNA and genes are located on the chromosome, right? So gene has got a very literal meaning कि चलो मम्मी पापा से जीन मिल गया, but we should be aware that how this gene is coming. हम लोग उसकी बात भी करेंगे. So you can write few things now. कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. Genes are unit of inheritance. Unit of inheritance. You know what is inheritance? One generation to the next generation. So whatever things are coming from one generation to the next, that is called inheritance. And what is the smallest unit of inheritance? Gene. सबसे छोटा क्या है? Gene ही है. अगर मेरी आईज ब्लैक है तो आई माइट हैव गॉट जीन फ्रॉम ईदर फ्रॉम माई फादर और मदर, क्योंकि दोनों के आईज ब्लैक. बाल जैसे हैं मम्मी पापा से मिले होंगे, स्किन कलर वहीं से मिले होंगे, राइट? सो दीज आर कॉल्ड जेनेटिक कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर. वी हैव टू टाइप ऑफ कैरेक्टर in our personality. One is called genetic character, inherited character. Another one is called acquired character. Acquired character is what that you learn from the environment, right? हम लोग कई बार जीन को अनसाइंटिफिकली भी यूज कर लेते हैं. जैसे कि मान लो कि आप में से कोई बहुत अच्छा गाना गाता है और इट मे बी पॉसिबल बिकॉज यू आर सच अ गुड सिंगर बिकॉज इन योर फैमिली ईदर योर फादर एंड मदर is a very good singer. Normally ऐसा होता है. तो people will say that I got a gene from my mother because my mother was a good singer, so I am a good singer. No, it's wrong. Because singing is what? Acquired character. It can never be genetic. है ना? You are singing good because you have learned your mother's singing throughout your life and you learned it. है ना? That is how you are singing well. Because we learn from our मतलब लैंग्वेज भी तो ऐसे ही सीखा था ना. लैंग्वेज को कोई ग्रामर पढ़ाया था क्या उससे पहले कि ऐसे ग्रामर पढ़ लो फिर उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन करो? नो, वी लर्न लैंग्वेज बाय लिसनिंग. तो आंखें अगर काली हैं दैट इज जेनेटिक्स. बट डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर है तो इट मे बी करप्शन बट नॉट जेनेटिक्स. एंड और मे बी टैलेंट ऑल्सो. टैलेंटेड है भाई, उसने देखा पापा डॉक्टर हैं यही काम करना है या मम्मी डॉक्टर यही काम करना है, पढ़ाई किया, नीट निकाला, डॉक्टर बन गया, राइट? बट इफ इट इज अ रूल, जैसे इंडिया में कुछ एक 20-25 साल पहले ये रूल होता था डॉक्टर साहब के बच्चे या डॉक्टर मैम के बच्चे डॉक्टर ही होंगे, तो पता ही था आपको, डोनेशन वाला सिस्टम चलता था. कुछ नहीं हुआ तो रशिया भेज दिया, पढ़ो, यूक्रेन भेज दिया. अब यूक्रेन में जितने लोग जाके मेडिकल पढ़ रहे थे सबको भागना पड़ा. वो सारे लोग परेशान है कि अब डिग्री कैसे मिलेगी, है कि नहीं? So that is the problem. Anyway, so next you can write genes carry information. Genes carry information or genetic trait carry information or genetic trait from one generation to the next. One generation to the next, right? So who is carrying the genetic trait and information? Genes. Father से बच्चों में, mother से भी बच्चों में. Next you can write normally one gene determines one character in body. One gene determines one character in body.
one character in body. But sometime a single character can be determined by more than one gene. Known as polygenic effect. What we call it? Polygenic effect. So that is there. One gene, one character. Biology में एक phrase चलता है, one gene, one character. But it's not always true. There may be some character that will be determined by a set of gene. That means more one gene. And the best example of polygenic effect is skin color. Skin color. So हमारे बॉडी में स्किन कलर जो है ना, दैट इज ड्यू टू पॉलीजेनिक इफेक्ट. जहां भी पॉलीजेनिक इफेक्ट होगा ना, वहां पे वेरिएशंस होंगी. इट वोंट बी कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट का मतलब ए या बी. वेरिएशन का मतलब ब्लैक से लेके व्हाइट के बीच में सारे पॉसिबल शेड होंगे. अभी इसी कमरे में हम लोग बैठे हैं, सबकी स्किन टोन अलग अलग है. यू कैन नॉट ग्रुप इट लाइक 4 टाइप के हैं या 2 टाइप के हैं या 3 टाइप के हैं. देयर इज अ variety of skin tone, because in my body, in your body, your skin color is determined by as much as 8 genes. 8 जीन एक साथ काम कर रहे हैं. उसमें से 4 फादर से आया, 4 मदर से आया, या फिर 4 काम कर रहे हैं. लेट्स से 2 is coming from father, 2 is coming from mother. And obviously उस कैरेक्टर में क्या ऐसा है कि 1 gene is for dark complexion, 1 gene is for normal complexion. So 1 gene for dark, 1 gene for normal. I mean normal means white complexion. So both merged together, then it gives wheatish color. You get my point? So it may be possible. कभी देखा होगा ना, फादर मदर दोनों wheatish है, बच्चा बहुत गोरा है. या फादर मदर दोनों wheatish है, बच्चा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है. Because father has got 1 gene of dark, 1 gene of fair. Mother has got 1 gene of dark, 1 gene of fair. और आप सबको पता है कि फादर मदर हाफ देते हैं, पूरा तो देते नहीं. अब इमेजिन करो, फादर से डार्क वाला आया, मदर से फेयर वाला आया, तो बच्चा भी व्हीटिश होगा. इट मे बी पॉसिबल फादर से आया डार्क वाला, मदर से भी आया डार्क वाला, तो बच्चा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा. हाँ, इट मे बी पॉसिबल फादर से आया कौन सा, फेयर वाला, मदर से भी आया फेयर वाला. दैट इज हाउ द वेरिएशन हैपन, है ना. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि पीपल हु आर लिविंग अराउंड द इक्वेटर दे विल बी डार्कर इन कॉम्प्लेक्शन, and people who are living in a, let's say, sub-Arctic zone, European, they will be white. तो अगर आप यूरोपियन व्हाइट की शादी अगर आप किसी इक्वेटर पे रहने वाले डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग से करा दें, तो बच्चा जिब्रा नहीं होगा. इट्स अ पॉलीजेनिक इफेक्ट, राइट. पॉलीजेनिक है ना, दोनों का इंपैक्ट आएगा. सो कलर विल बी मिक्सचर ऑफ द बोथ. Color will be something like of Obama. Obama को देखा आपने? So that will come together and that will create it. Anyway, next you can write. There are approximately 30,000 genes. 30,000 genes present in human being, or human cell. Don't get confused with that. कई बार लोग ये पूछते हैं, आते हैं कि सर एक सेल में 30,000 या पूरे बॉडी में 30,000. तो दोनों ठीक है. 1 सेल में 30,000 एंड द सेम सेल कॉपी इज एवरी अदर सेल, है ना. तो वो 30,000 को रिपीट नहीं करना है. इट्स नॉट मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सेल्स. नो, इट्स सिंपल लाइक यू गो टू द बुक शॉप एंड बुक शॉप इज बोस्टिंग दैट माई बुक शॉप हैज गॉट 50,000 बुक. आपने कहा कि यहीं जाना चाहिए,
और आप गए तो देखिए 50,000 बुक्स तो था, सारे के सारे बिपिन चंद्रा के आधुनिक भारत थे। अब बताओ कितने बुक थे उसके पास? एक ही था ना। तो सेम कंडीशन है, 30,000 gene is there in one cell and same 30,000 is there in every cell. So quality wise it's 30,000, quantity नहीं निकालना है. So a statement is true that human being has 30,000 genes. True. Human cell has 30,000 genes. True. Because that same 30,000 everywhere. Because we initiated our life as a single cell. Father's sperm, mother's ovum came together. Zygote was formed, 30,000 genes established. And then each and every cell of our body is basically copy of that first cell. So each and every cell is having the same copy of 30,000 genes. So there is no point saying कि एक में है कि सब में, बात एक ही है. One more point you can write. Genes are carried by chromosomes from one generation to the next. Genes are carried by chromosomes from one generation to the next. Chromosomes appear, इसी में लिख लो आप, chromosome appear only at the time of cell division. Only at the time of cell division. You know, cell division is reproduction. Chromosome appear only at the time of cell division. Let's say if I take one gene out, अगर हम अपने बॉडी से एक सेल निकाल ले, if I take one cell out of our body, तो 99.9% चांस है कि आपको उसके अंदर न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? क्रोमेटीन मिलेगा. Only when the cell is about to divide, cell in the process of division, only that time chromosome formation take place. So this structure, chromosome, तभी आएगा when the cell is about to divide. Normally you don't see chromosome. If you want to study chromosome, you will have to wait till the time the cell start its division process. क्योंकि अब सिंपल लॉजिक लगा लो, थ्रेड है और थ्रेड को बराबर बांटना है. So let's square it so that you can count it and then you can distribute it. Cell division is reproduction. Sperm production is cell division. Ovum production is cell division. So when male or father is producing a sperm and mother is producing ovum, at that time cell division will occur. And when the cell division will occur, then chromosome formation will take place and the chromosome will divide into half and half. And genes are located on the chromosome. So who is carrying genes from one generation to the next generation? Chromosome. So it's simple like that. Genetic traits and characters are there on gene and gene is there on chromosome. Blue eye है, इसका इंफॉर्मेशन कहां लिखा है? जीन पर. लेकिन जीन खुद कहां है? क्रोमोसोम पर. So gene is like passenger, chromosome is like bus, right? And in this क्रोमोसोम देयर इज नॉट अ सिंगल जीन. ऐसे भी यहां भी तो सिंगल जीन नहीं है ना, बहुत सारे हैं. तो यहां भी क्या होंगे? बहुत सारे डॉट्स होंगे. यू कैन मेक एज मेनी डॉट्स यू वांट. इधर बहुत सारे डॉट्स हैं. दिस ऑल आर जीन्स. सो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो. अभी क्या है, आज का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट सेल इज लाइक अ फैक्ट्री एंड एक ही चीज पे फोकस करना है. फैक्ट्री का मेन काम क्या है? प्रोटीन बनाना. प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम. प्रोटीन बनाने का सिस्टम इंस्टॉल्ड कहां है? ईआर पे, रफ ईआर पे. प्रोटीन कैसे बनाएगा? डीएनए के इंस्ट्रक्शन से. अब हमने पढ़ा डीएनए का हिसाब किताब, न्यूक्लियस में कैसे होता है. स्ट्रक्चरल पार्ट वी हैव डन इट, राइट. स्ट्रक्चरल पार्ट में क्रोमेटीन, क्रोमेटीन के दो पार्ट, डीएनए एंड हिस्टोन. हिस्टोन हटाओ, मेंटली हटाओ. देन डीएनए सेगमेंट्स आर जीन. When DNA coils with histone, then it may chromosome and chromosome will hold gene as a points, है ना. Structural part is done. Now we'll go for the functional part. अब हमें ये पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन लिखा कैसे, in which language it is written, right? Yes, please. Yes. Every single cell in our body is having same 30,000 genes. Same 30,000 genes. But your question is how these cells are functioning differently, right?
Because out of this 30,000 genes, only 2% genes are active in a particular cell. बाकी 98% स्विच ऑफ हो चुके हैं. You got my point? वो हम लोग आ रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, that will come, right? Anyway, so next let's talk about the next thing, that is structure of DNA and RNA, and then we'll talk about the thing DNA. And DNA is what? Deoxyribonucleic acid. Now this is very important to understand it so that we can have very smooth biotechnology classes. अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम सब बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हैं कि बायोटेक में कोई टेंशन नहीं आए, राइट? एंड डीएनए is a chemical, it's a biochemical. Can we say that biochemical? नाम ही है, देखो, deoxyribonucleic acid, it's biochemical. Without any doubt, it's a biochemical. And I'll tell you one thing, that DNA is biochemical, or it is called biopolymer. You know polymer? Polymer is like polythene, PVC, polyvinyl chloride. In biology, everything is polymer. Protein is polymer. Made up of many amino acids. पॉलीमर का सिंपल होता है, एक ही तरीके की चीज को जोड़ते चले जाओ, पॉलीमर बन जाएगा. विनाइल क्लोराइड एंड मेनी विनाइल क्लोराइड पुट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड. polyethylene, polypropylene. In a most easy term, अगर आपने कोई मोती का माला बनाया है तो मोती जो है वो क्या है? यूनिट है, और पूरी पूरी माला जो है वो क्या है? पॉलीमर है. In that way you can understand. Or let's say this wall, we can also say that wall is a polymer structure, although it is not true. Analogy में बता रहा हूं. And the unit of wall is what? Brick. So many bricks put together in a definite fashion, and then we get a big structure that is called polymer, that is called wall. So DNA is basically a polymer, and this polymer is made up of some unit. So compare DNA as polymer. Polymer is like wall, and the wall has a unit that is called brick, and brick is made up of three things. That is called raw material: clay, sand, and water. You get my point? So first you put clay, sand, and water, you create bricks. Then you put the bricks in a definite fashion and order, then you create wall. What you look at is a wall. Similar kind of thing is there with the DNA. So it's like, for the understanding of the DNA, we need to understand that there are raw material, then this leads to what? Unit. Unit is also called monomer. In terminology, it's called monomer. And then it gives what? Polymer. Like, I'll give you one example for that. Again, I'll repeat the same thing. Brick, raw material क्या है? तो clay, sand, and water. Put it together, you get bricks. And bricks are unit or monomer, and then you put the units together, then you get polymer. ठीक है? DNA is the same thing. DNA हमारा क्या है? तो पहले मैं लिख देता हूं, DNA is our polymer. DNA is what? Polymer. So what is the unit of DNA? And what is the raw material of DNA? तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. Raw material of DNA क्या है? देखो, सबसे पहले first is deoxyribose sugar. What is that? Deoxyribose sugar. That is the first raw material. नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम किसी काम का है नहीं. It's a sugar. Like you know one sugar that is called glucose. Glucose sugar जानते हैं? वैसे ये राइबोस शुगर है. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ये शुगर क्या है? ये C5H10O5 है. शुगर में एक सिंपल है, 1:2:1 का रेशियो होना चाहिए. सो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6. हेक्सोज हो गया. इसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. लेकिन अगर हमारे पास 5 वाला है, C5H10O5, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटोज. और पेंटोज का जनरल नाम क्या है? राइबोज. लेकिन इस राइबोज में एक प्रॉब्लम है, ये C4 है. C4 है.
होना चाहिए कितना, ओ सॉरी O4 है, होना कितना चाहिए था 5, लेकिन है कितना 4, तो क्या लगा दिया आगे डीऑक्सी. डोंट गेट इनटू द नेम, इट्स जस्ट लाइक केमिस्ट्री नेम, इट्स अ डीऑक्सीराइबोस शुगर. कुछ नहीं याद रहे, शुगर तो याद रहेगा, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइट. So this is your deoxyribose sugar. I am writing here for your understanding C5H10O4. That is one raw material. Second raw material that we got is phosphate group. क्या है ये? Phosphate group H3PO4. फॉर्मूला नहीं याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं सिंपल. It's phosphoric acid. Don't write the formula, but कोई याद रखने की जरूरत नहीं है. Phosphate याद रहेगा बहुत है. And the third one is very important, and that is called nitrogen bases. What is that? Third is nitrogen bases. So now you know the raw material. Like brick has raw material, clay, sand and water. Similarly, DNA's raw material is sugar, phosphate and nitrogen base. Sugar, phosphate, nitrogen base, right? Nitrogen bases are of 4 types, है ना? Nitrogen bases are of 4 types. What are those type? So this type are A, that is adenine, then guanine, G, I am writing here. So adenine, then there is G, guanine, then C, cytosine, and T, thymine. If you don't remember this name, at least you can remember AGCT. इतना तो याद रहेगा, AGCT, that's it. अब आप एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन सुना है आपने, इसके बिना बायोटेक नहीं हो सकता. नहीं भी सुना तो आज पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, सुना ही है, सब सुने होते हैं. So we have sugar, that is deoxyribose sugar, that is first raw material. We have phosphate, that is H3PO4, and we have nitrogenous bases, nitrogen compound, and nitrogen compound are of 4 types. How many types? 4 types: adenine, guanine, cytosine, and thymine. These are the raw material. अभी हमें इससे बनाना है क्या? Bricks. What we are going to make? Bricks out of it. And how to make brick, we'll get into that. तो brick बनाने के लिए क्या चाहिए? Clay and then sand and water. So we took sugar लिया तो हमने लिखा S, sugar. फिर हमने लगाया phosphate, तो let's say P, phosphate, and any one of these 4 you can use. कोई भी एक, जो मर्जी. Let's say I'm putting thymine. So what we got is unit. ये क्या है? DNA का unit है. It's like brick, and this brick is known as nucleotide. क्या बोलते हैं इसको? Nucleotide. And it means that DNA structure is made up of what? Many nucleotide put together. अभी बनाएंगे भी हम लोग. But first of all, you need to understand DNA is a polymer. It's a polymer. टेक्निकली इट्स पॉलीमर, आप बोल भी सकते हो बायोपॉलीमर है, कोई दिक्कत नहीं. पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स. मोनोमर ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. एंड इनसाइड द न्यूक्लियोटाइड व्हाट यू सी, 3 रॉ मटेरियल हैव बीन यूज्ड: sugar, phosphate, and any one of these 4 nitrogenous bases. This T is variable. This T can keep on changing. T के जगह पे A आ सकता है, C आ सकता है, G आ सकता है. अब आप बताओ कितने टाइप के ब्रिक्स बना लेंगे हम? 4 टाइप के, एक A वाला, फिर G वाला, C वाला, T वाला, 4 टाइप के ब्रिक्स बनेंगे, है ना? So that is what our nucleotide is. Now arrange this nucleotide and you can develop DNA, है ना? We have only 4 types of nucleotides and we can arrange this nucleotide to make the DNA. We'll go to that level to understand how the things are written onto the DNA. है ना? So first of all, there should not be any confusion in this. Raw material, deoxyribose sugar, it's a chemical, again chemical, and these 4 type of chemicals.
टेक वन फ्रॉम ईच। शुगर में कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप में कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन यहां पे एक ले लो। सबको जोड़ के क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और उसको जोड़ के हम क्या बनाएंगे, डीएनए। लेट्स मेक इट। व्हाट यू हैव सीन, अभी तक आपने जो देखा है उसमें आपने क्या देखा कि डीएनए को हमने कहा कि दिस इज डीएनए, राइट, ये डीएनए था। लेकिन आपने पेपर में, मैगजीन में, बुक्स पे कैसा डीएनए देखा, ऐसा वाला, राइट, दिस काइंड ऑफ डीएनए। It looks more convincing because that is what we have seen in a movie, in documentary, and anywhere else. Perfectly fine. ये तो पता है ना आपको, डबल हेलिकल, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर। This is DNA. Perfectly, no issues. But I'm going to make DNA according to what we have studied so far. Nucleotides, unit of DNA. So let's start it. हम लोग यहां पे डीएनए बना रहे हैं एंड डीएनए वी आर मेकिंग लाइक दिस। शुगर है ना, इधर फॉस्फेट था और इधर क्या लगाया था, थायमिन। चलो डन। वी आर एडिंग अनदर ब्रिक, तो इसके साथ एक और शुगर, अभी कोई भी लगा सकते हैं, तो साइटोसिन लगा लेते हैं और फॉस्फेट। नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, वी हैव टू ज्वाइन इट। सीमेंट भी लगाना पड़ेगा। So for that, this is what the bond is. ये बॉन्ड बनाया, फॉस्फेट और शुगर के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना। केमिस्ट्री है, बॉन्ड ही बनेगा, राइट। नाउ वी आर पुटिंग अनदर वन, शुगर, लेट्स से वी आर पुटिंग एडेनिन, एनीथिंग यू कैन टेक, एंड देन इट इज फॉस्फेट। ब्रिक नंबर कौन सा है, ये थर्ड है। देन अगेन वी आर हैविंग शुगर, देन वी आर हैविंग लेट्स से गुआनिन and phosphate. Then again we are having sugar. Let's repeat guanine and phosphate. There is no particular fashion. No matter what do you put. Let's say put adenine and phosphate. है ना, एक और बना लेते हैं, sugar, thymine and phosphate. And for everywhere we are going to make a bond between sugar and phosphate. ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है अभी, लेकिन अभी एक ही साइड बना है। दिस वॉल हैज डबल साइड, यू हैव टू पुट 2 ब्रिक्स पैरेलली। तो अभी क्या है, वन पार्ट ऑफ द हाफ ऑफ द वॉल इज क्रिएटेड, वन साइड ऑफ द वॉल, इट्स लाइक 2, 2 है। अब इधर से हमें वॉल लगाने, से इस साइड से, इधर से, राइट, और लेट्स से व्हाइट से ही करते हैं। इधर से जब हमें लगाना है ना, तो वी हैव टू फॉलो वन सिंपल रूल, एंड द रूल इज दैट एडेनिन विल कंबाइन विद थायमिन एंड गुआनिन विल ऑलवेज कंबाइन विद साइटोसिन। इसमें कोई रूल नहीं था, वर्टिकल लीनियर फैशन में कोई रूल नहीं है, जो मर्जी वो लगाओ। बट नाउ व्हेन यू आर पुटिंग सम ब्रिक फ्रॉम द अदर साइड, देयर यू हैव टू फॉलो रूल, बिकॉज इट्स केमिस्ट्री, बॉन्ड बनाना है और कॉम्पिटेबल होगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा। सो एडेनिन इज मेकिंग बॉन्ड विद थायमिन, एडेनिन इज नेवर मेकिंग बॉन्ड विद गुआनिन, साइटोसिन, वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है और थायमिन भी डबल बॉन्ड बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो डबल वाला डबल के साथ, ट्रिपल वाला ट्रिपल के साथ। सो दैट इज समथिंग वी रूल फॉलो एंड इट इज फॉलोड ऑल थ्रू द बायोलॉजी। अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नहीं है, इट्स फॉर एवरी डीएनए दैट वी हैव ऑन दिस अर्थ, whether it is bacteria or human being, whether it is virus or any plant और चीता और भालू जो भी है। So what we are going to do, इधर देखो, इधर थायमिन है तो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड एडेनिन, शुगर एंड फॉस्फेट, एक ब्रिक लगा। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, शुगर एंड फॉस्फेट, डबल बॉन्ड थायमिन, sugar and phosphate, triple bond cytosine, sugar and phosphate, triple bond cytosine, sugar and phosphate, double bond thymine, sugar and phosphate, and double bond adenine, sugar and phosphate. Isn't it? Same way we have made it.
and again we have to connect it with the bond कैसे बनेगा? शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में. अब ये डीएनए बन गया. हाँ जी, सेल नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाँ, it depends upon the nature of the bond, right? Hydrogen bond is in general weak bond. सामने से 3 हाइड्रोजन, इधर से भी 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड्स बनाएंगे. 2 हाइड्रोजन उधर से, 2 इधर से, 2 बॉन्ड बनाएंगे. नहीं, मैंने कहा वीक है? डिड आई से वीक? नहीं. No, you cannot say in that way कि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ही वीक होगा. That depend upon the type of, because bonds are different, ionic bond, covalent bond, hydrogen bond. हाँ, कहाँ पे? नहीं, यहाँ लोन पेयर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्ड में लोन पेयर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आप बता रहे हैं. एनीवे, हाँ जी. एडेनिन ओनली थायमिन. No, never. It's a compatibility, lock and key kind of thing. 2 lock and 2 keys cannot work. It's lock and key which works, right? It's chemistry, है ना? अब NaCl है, तो Na will combine with Cl. Na will not combine. Cl will not combine. It's a chemistry, pure one. Now the thing is that यहाँ पे फोकस हमें इस बात को करना है कि what I made is looking quite different from this. है ना? How it is possible? This is actually the DNA look like, and this is what that is also true. So let's look at this DNA, and does it look like that it is a staircase which has been twisted, right? The twisting is natural. Watson and Crick won the Nobel Prize for that, just to explain the DNA structure, right? So we cannot question that. Nobel Prize मिल गया तो क्वेश्चन क्या करेंगे? लेकिन हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ स्पाइरल स्टेयर केसेस. कई बार होता है ना स्पाइरल एयर केस, ऐसे जाते हैं, वैसा ही कुछ. सो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन डू वन थिंग. हम इसको सीधा तो कर सकते हैं, अनट्विस्ट कर सकते हैं. हमने इसको अनट्विस्ट कर दिया तो इट विल लुक लाइक दिस. दिखेगा ना ऐसा? और ये बीच में क्या बन जाएगा बताओ? स्टेयर्स बन जाएंगे, फुट रेस्ट बन जाएंगे. So what we have done, अब देखो ध्यान से, आप बिल्कुल अच्छे से देखो. DNA is like thread-like a structure. Fine. For many years, it has been thread-like a structure. Then one day, Watson and Crick, 2 scientists, they said that no, they look like this. So they dilated it. They basically get into the chemistry of it, and they find out that it is a spiral double-stranded structure, which has got this kind of. हमने क्या किया? हमने कहा कि ठीक है, जिसको अनट्विस्ट करते हैं और बड़ा करते हैं. तो यहां तक ले आए. अब इसको और बड़ा करते हैं, एक स्टेप और बड़ा करेंगे. तो एक स्टेप और बड़ा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका हैंड्रेल, और ये भी बन जाएगा दूसरा हैंड्रेल, और बीच में ऑटोमेटिकली क्या बन गया? स्टेयरकेसेस. नाउ वी कैन रिलेट. आई मीन दिस हैंड्रेल is what? Sugar and phosphate. And these stairs are what? Nitrogenous base pair. What it is called? Base pair. Remember the word base pair. Base is always in pair. Because adenine, thymine is one pair, guanine, cytosine is another pair. So now you know that this is how this DNA should look like if we go and look into the chemistry of it. अब ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर तो है ना, एंड आई हैव मेड दिस पॉलीमर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 multiplied by 2 because both side. How many bricks has been used? 14. So 14 nucleotide has been used, and then we got a small segment of the DNA. Maybe one gene we got it, because segment of DNA is known as gene. So all the thing is fine. It is DNA. Perfect. This is DNA, more perfect. Then for the sake of understanding, we untwisted it, and then we got to know
that okay, the handrail of the DNA is made up of phosphate and sugar, and the staircases are made up of base pairs. All nitrogen base pair कहो या base pair कहो, but never forget the word base pair, है ना? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, we got it, we got the thing. I mean, this is called phosphodiester bond. This is called phosphodiester bond. And this structure is hydrogen bond, like I told you, but they will never ask hydrogen bond. Hydrogen bond is a very common bond among organic compounds. सब में होता है, दुनिया भर की चीजों में होता है. What make it difference is phosphodiester bond. I mean, DNA का special bond क्या है? Phosphodiester bond. So maximum if they can explore into the information part, then they can ask that which bond is present in DNA, that will be phosphodiester bond. वो भी additionally आप लिख लो कहीं पे. Now the question is how the information would be written. Information लिखा हुआ कैसे है? Eyes blue है या black है, that is written on the DNA. So it is written, then must be language. If something is written somewhere, there must be some language. And to have a language, you need to have letters, words, and sentence formation. Whether you write something in Hindi or English, you know that the very basic thing of the language is letters, alphabets. Then you put the alphabets, you make words, and then you put the words in a definite order, you get the sentences. है ना? English language कितने alphabets है? 26. And out of 26 alphabet, we can make thousands of words. And by arranging thousands of words, we can make infinite number of sentences. मतलब कभी सोच के देखो ना, क्वांटम फिजिक्स भी 26 अल्फाबेट का ही लिखा हुआ है, और हिस्ट्री की किताब भी 26 अल्फाबेट का ही लिखा हुआ है, राइट? इज देयर एनी टैब दैट आफ्टर दैट वी कैन नॉट राइट एनीथिंग? नो, because 26 alphabet, thousands of words, and thousands of words can be, put in a definite orders, and then we can make infinite type of sentences. Same kind of thing is there here also, है ना? यहां पे भी देखो, अभी मैं बताता हूं आपको. I'll just remove this all. So this is again a structural part, we got it, but now we are going to understand very important thing, that is genetic language of DNA, right? Language of DNA, or we can call it genetic language. So language of DNA और genetic language. हम लोग बहुत अनसाइंटिफिक पढ़ेंगे, मतलब उसमें साइंस नहीं ढूंढना है, उसमें ये ढूंढना है अंडरस्टैंडिंग. यू गेट माय पॉइंट? लाइक आई टोल्ड यू, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स विजडम काइंड ऑफ थिंग. तो वहां तक ले जाके छोड़ना है जहां से विजडम आप खुद डेवलप कर लोगे. डोंट गेट इनटू द साइंस थिंग, है ना? क्योंकि मैं जो वर्ड्स यूज करूंगा बहुत कॉमन अनसाइंटिफिक वर्ड्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो लैंग्वेज ऑफ डीएनए और जेनेटिक लैंग्वेज. सो किसी भी लैंग्वेज का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? देयर शुड बी alphabets. So alphabets. अब बताओ, look at this structure. For the alphabet you need to have variation, variability. शुगर अकेला है, क्या शुगर का कोई वेरिएशन है यहां पे? तो क्या शुगर अकेला अल्फाबेट बन सकता है? नहीं. फॉस्फेट ग्रुप भी अकेला है, क्या वो अल्फाबेट बन सकता है? नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप के अल्फाबेट्स बन सकते हैं. अब आप कहोगे कि सिर्फ 4 के, क्यों भाई 4 के क्यों नहीं बन सकते? हिंदी तो 52 है, हिंदी में 52 अल्फाबेट्स है, और इंग्लिश में सीधा कितना है? 26. तो बन सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अल्फाबेट्स जो हमारे हैं वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 4. सो एडेनिन, guanine, cytosine, thymine. We got only 4 alphabets. Now with alphabets what we do? We make words. Once you learn the alphabet in your nursery classes, what was the next step? To learn the words. Simple words से learn करना हमने शुरू किया. So what we are going to make in a genetic language is word. इंग्लिश में बहुत अच्छा रूल ये है कि वर्ड्स बनाने का कोई निश्चित
फॉर्मूला नहीं है। 1 लेटर वर्ड भी हो सकता है लाइक ए, 2 लेटर भी हो सकता है लाइक ए एन एन, इन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहां पे एक रूल फॉलो करना है, वर्ड्स कैन बी मेड ओनली इन दिस फॉर्मेट। कितने स्पेस हैं इसमें? 3। आप 3 ही लगा सकते हो। सोचो इंग्लिश में अगर ऐसा होता तो क्या होता, फिर तो हम रैट कैट मैट ही पढ़ते, है ना, क्योंकि 3 से कम और 3 से ज्यादा आप लगा ही नहीं सकते। तो यू हैव 4 लेटर्स एंड यू हैव टू मेक वर्ड्स विच आर ओनली 3 लेटर लॉन्ग। समथिंग लाइक एडेनिन एडेनिन एडेनिन, रिपीट भी कर दो, एडेनिन थाइमिन एडेनिन, और लेट्स से थाइमिन एडेनिन एडेनिन, थाइमिन थाइमिन एडेनिन, है ना, कुछ भी बनाओ। कितने बना लोगे टोटल? 64। यस, दैट इज 4 to power 3. टोटल हाउ मेनी? 64. Only 64 words can be made. In all possible way, if you arrange 4 of them in this 3 format, the total number of words you can make it 64. तो easy है ना, 4 letter हैं, 64 words हैं. That means if we make a dictionary of genetics, then it will have only 64 words. उससे ज्यादा ही नहीं. Now we have words. Next one is what? We are going to make sentence. सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस बनाने का कोई रूल नहीं है ना. यू कैन यूज 64 वर्ड्स अप टू एनी लेंथ, इन एनी रिपीटेशन, इन एनी कॉम्बिनेशन. सो देयर इज नो टैब ऑन द लेंथ, देयर इज नो टैब ऑन रिपीटेशन, देयर इज नो टैब ऑन द वे यू पुट इन. आप बस बनाते जाओ. तो कितने बनेंगे? इनफाइनाइट. Because you understand this DNA that we are talking about, it's not about only human being. It's about from virus to human being. In between जितनी भी चीजें आप जानते हो लिविंग वर्ल्ड के, सबके डीएनए का फॉर्मेट यही है. Every single organism on this earth who are having DNA as genetic material, they have 4 letters, they have 64 words, but they have different type of genes. हम सबके जीन नहीं मैच कर रहे हैं. Because there are some differences in our sentences. But yes, essentially, all the living organism on this world who is containing DNA as genetic material, they have 4 letters, 64 words. लेकिन हम सेंटेंस कुछ भी बनाएंगे. सेंटेंस जैसे बना लिया एडेनिन 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 गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन, कुछ भी बना लो. तो ये क्या बन गया? इट्स वन जीन. दिस इज वन जीन. दिस इज वन लेंथ जीन. अब आप एक बात बताओ, लेट्स से दिस इज सेंटेंस, इसमें कैसे बनेगा सेंटेंस? बिकॉज इट्स रिटन ओवर हियर, राइट. आमने सामने क्या 3 मिलेंगे आपको? अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाना शुरू करें तो विल वी गेट 3? नो. सो हाउ कैन वी गेट 3? वर्टिकल. दैट मीन्स द थिंग्स विच आर रिटन ऑन देयर, यहां पे जो लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है? This is one word, this is another word, and this will go on. You get my point? I'll tell you one thing that I have made only 7. कितने बनाए हमने? 7 हमने बनाए. हमारे बॉडी के डीएनए में ये जो बेस पेयर है ना, वो 300 करोड़ है. कितने हैं? 300 करोड़. If you count it from this point, ये तो 7 के हैं, और बाकी के 300 करोड़ घर जाके लिख लेना, है ना. लेकिन इफ यू स्टार्ट राइटिंग, इट इज 300 करोड़. तो ओनली वन वे दैट यू कैन रीड दैट इज इन अ वर्टिकल मैनर, राइट. एंड दैट इज ऑल्सो वन साइड, नॉट द बोथ साइड. इधर वाला ही मानना है, बाई तरफ वाला सीधा ही तरफ रखो. बायोलॉजी वाले जानते होंगे कि इसमें 3' 5' एंड होता है और 5' 3' एंड होता है. दैट इज अगेन केमिस्ट्री, बट हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़ना. तो हम एक सिंपल जरूर रखेंगे, बाई तरफ वाला, है कि नहीं. इधर वाला क्या है? कुछ नहीं. बाई तरफ वाले को कहते हैं सेंस स्टैंड. सेंस का मतलब उसके लिखे का कुछ सेंस है. और उधर वाले को क्या कहते हैं? नॉनसेंस स्टैंड. कोई सेंस नहीं है उसका. यू गेट मी पॉइंट? जैसे कि एक फोटोग्राफ होता है, एंड फोटोग्राफ को जब आप देखते हो तो आपको बढ़िया दिखता है, सारे कलर्स दिखते हैं. लेकिन एक उसी फोटोग्राफ का नेगेटिव होता है.
होता है नेगेटिव देखा आपने, उसको देखोगे नॉनसेंस ही तो है. Although photograph is coming from negative only, if you lose the photograph, you can get it from negative. But still, the main thing is what? Photograph. Similarly, this is sense and this is nonsense, right? Why it is so? I'll tell you. But first of all, I just want you to understand that how these information are written. अभी जो हम कल से बात कर रहे थे ना, DNA has got the blueprint. DNA has information. DNA has its own language. Now you understand what the language is. ठीक है, हम इसको पहचानते नहीं, समझते नहीं, बट पता तो चल गया कि like any other language, DNA has its own language, genetic language. Like any other language, DNA has 4 alphabets. These alphabets are nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, thymine. Like any other language, it has got 64 words that is called codes. उस words को क्या कहते हैं हम? Codes. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Actual लिख देंगे. अल्फाबेट्स के बदले में क्या लिखेंगे? बेस. विच बेस? नाइट्रोजनस बेस. वर्ड्स के बदले में क्या लिखेंगे? कोड्स. एंड दिस इज व्हाट? जीन. सो बेस, कोड एंड जीन. सो जीन को हाउ डू यू रीड द जीन? इन अ वर्टिकल मैनर, राइट? एंड दिस इज सेंस. I'll write it over here. थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आगे भी काम आएगा. So this is sense and this is nonsense stand. और nonsense को template भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Template. Template is like negative only ना. If you remember, I told you one thing. The DNA is more stable, isn't it? कल कहा था ना हमने. RNA is less stable. What is the biggest difference between DNA and RNA? DNA डबल स्टैंडर्ड है, RNA सिंगल होता है. अगर हम इसका नॉनसेंस हटा देना तो that will look fairly like RNA. RNA is just one strand. There is no other strand. I mean, in RNA we don't carry that adenine, thymine and guanine side. Pair वाला condition है ही नहीं. There is no pair. It's just one side. So now we have to understand why it is so. Let's say due to some reason if this C is gone, ये C चला गया, गायब हो गया. इसी को कहते हैं म्यूटेशन. You know the word mutation? Mutation is sudden change in DNA. You never know why it happens. Yes, it can happen due to pollution. It can happen due to smoking. It can happen due to drinking. It can happen due to radiation. It can happen due to internal cell environment. But it happened. It is happening in our body. मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में, हम सब ने बहुत सारे म्यूटेशन अट्रैक्ट कर लिए हैं, है ना? But some mutation could be very dangerous. Some mutation could be so dangerous that it can initiate cancerous tumor in the body. Many of the cancer are linked with mutation in DNA. You know that when we get exposed to the radiation, it damages our DNA and the outcome is cancer. पढ़ा तो है कभी ना कभी, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि this has gone, ये तो चला गया C. अब C अगर चला गया तो it's a big problem because the entire sentence has gone. कैसे? जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, राम हैज रेड हैट. जानबूझ के 3-3 का लिखा, कुछ तो मीनिंग है इसका. लेट्स से दिस S हैज गॉन, ये S चला गया, S चला गया, लेकिन पढ़ेंगे तो 3-3 में ही ना. तो अब पढ़ के दिखाओ. राम HAREDHAT और अगला वाला. You get my point? Just you removed one, entire meaning is changed, isn't it? Gene become faulty. खत्म कहानी. वही जीन था जो कैंसर से बचा रहा था, अब वो जीन नहीं बचा रहा तो कैंसर हो गया. You get my point? It's not like the entire gene would change. No, one thing will come out, and that is done. That is enough. That is called point mutation. What we call it? Point mutation. लेकिन इसका मतलब तो फिर कैंसर हो जाना चाहिए हम सबको. नहीं होगा, डोंट वरी. इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो सी गायब हुआ है ना, इधर क्या कौन सा है? जी है. तो यहां वापस सी आएगा. करण अर्जुन आएंगे, है ना? क्योंकि आप अभी पढ़ा था ना हमने सी एंड जी कॉम्प्लीमेंटेशन. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉनसेंस.
It's not nonsense. It's a template. So let's say I have accumulated some kind of mutation in my body, right? Mutation हुआ, कुछ कुछ इधर उधर से गायब हो गया. Maybe I got some disease. Maybe I could not get some disease. लेकिन some error is there in my DNA. It happens. With the time it will happen. Every one of us attracted some kind of mutation. But whenever my son is being produced, whenever my daughter was being produced and I contributed a sperm, so during cell division, proofreading will happen. क्या होगा वहां पे? Proofreading होगा. Mechanism है proofreading का हमारे body में. And during proofreading, in the sperm and ovum, this will bring back what? See, वापस लाएगा. That is how our next generation are saved from many mutations that we have accumulated in our lifetime. सोचो अगर एरर आगे चलता चलता तब तो बहुत दिक्कत होती. Yeah, you can say like that. It's a template because we have one template and template will decide which one will come over. प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम होगा जब दोनों गायब हो जाए. या विल टॉक अबाउट दैट. प्रॉब्लम क्या होगा? दोनों गायब हो गया. अब दोनों जब गायब हो गया तो क्या होगा? नो प्रूफ रीडिंग एंड दैट एग्जैक्टली विल बिकम व्हाट? जेनेटिक डिसऑर्डर. पर दोनों गायब हो उसके लिए लक खराब होना चाहिए, है ना? या फिर इंसान भयंकर हेवी स्मोकर होना चाहिए, हेवीली एक्सपोज टू द पोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि दिल्ली में रहना चाहिए इंसान, राइट? और लेट्स से लाइफ स्टाइल शुड बी वेरी बैड, लॉट्स ऑफ जंक फूड, लॉट्स ऑफ बैड ऑयल्स, रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा हो, गामा रेडिएशन से खेल रहा हो इंसान, है ना? गोवा में जाके धूप में बैठा हो 10-10 घंटे बिना सनस्क्रीन लोशन लगाए हुए, है ना? तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दोनों गायब हो जाएंगे. बट नॉर्मली क्या गायब होता है? एक. इधर वाला गायब हुआ तो इधर वाला लेके आएगा वापस, इस साइड का गायब हुआ तो ये लेकर आएगा. दैट इज व्हाई डीएनए इज स्टेबल. यू गेट माय पॉइंट? बट सोचो अगर एक ही साइड होता तो गायब हुआ तो गायब. दैट इज व्हाई आरएनए इज लेस स्टेबल. तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे, आरएनए इज लेस स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल. नाउ यू गॉट द आंसर. व्हाई? अब आप सोचो इसी बात को कि आरएनए वायरस के वेरिएंट जल्दी जल्दी क्यों बनते हैं? क्यों कोरोना वायरस के वेरिएंट जल्दी जल्दी आ रहे हैं? क्यों आरएनए वायरस ज्यादा डेंजरस मानते हैं? ज्यादा रोग, ज्यादा बीमारी उसी से हो रही थी क्योंकि वो आरएनए है, उनका एक ही स्टैंड है, वो बार बार चेंज हो रहा है, म्यूटेट कर रहा है, वो अपना फॉर्म बार बार बदल रहा है. वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि हम उतनी तेजी से मेडिसिन भी नहीं बना पाएंगे, राइट? बट डीएनए वाला एक बार जब हमने उसको समझ लिया, वो मान गया. स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट कर दिया. दुनिया का पहला डिजीज जिसको पूरी दुनिया से हटा दिया गया, दैट इज स्मॉल पॉक्स. इट्स अ वायरल डिजीज and there is no single case of a smallpox on this earth now because we have contained that disease. खत्म कर दिया, वैक्सीन लगा दिया सबको, दुनिया में हर एक आदमी को वैक्सीन लगा हुआ है. वायरस कैन लिव इन ओनली ह्यूमन बीइंग. तो ठीक है, कोई इंसान स्मॉल पॉक्स में है ही नहीं तो वायरस भी नहीं है. WHO के पास उस स्मॉल पॉक्स का लास्ट सैंपल पड़ा हुआ है. इट अ पोटेंशियल बायो वेपन एक्चुअली. अगर वहां से निकल जाए तो हम बायो वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, जो जाहिर सी बात है नहीं निकलेगा कभी भी. पोलियो इज समथिंग लाइक दैट ओनली. इफ वी वर्क वेरी हार्ड, अफगानिस्तान पाकिस्तान थोड़ा काम ठीक से कर ले ये लोग, तो पोलियो खत्म हो जाएगा. हमने तो खत्म कर दिया था, वी एरेडिकेटेड पोलियो, लेकिन ये इधर से आ जाते हैं लेके, क्योंकि वहां उन्होंने किया नहीं, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाया नहीं, और उनके बच्चे यहां आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट. सार्क नेशन का कॉन्सेप्ट जानते हो ना? तो वी अलाउ देम, और अलाउ करना भी चाहिए. बच्चों की क्या गलती है? फॉर दैट मैटर पब्लिक की क्या गलती है? पाकिस्तान का पब्लिक तो बहुत बढ़िया है. हमने देखा पाकिस्तान के पब्लिक इंटरव्यू, दे आर विलिंग टू मर्ज इनटू इंडिया आफ्टर चंद्रयान 3. देखा होगा आपने, बोल रहा है कि अब मर्ज कर दो, बिकॉज यहां पढ़ाई नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं. उसी में से एक बोल रहा है कि नहीं, वो मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मर्ज हो गए तो हम उनको भी वैसा ही बना देंगे. That is a political thing basically. People are very cordial, very good. हाँ. हमारे बॉडी में साइटोसिन चला गया तो हमारे बॉडी में तो उसका इंपैक्ट आएगा, रोग डिजीज आएगा, नेक्स्ट में नहीं आएगा. प्रूफ रीडिंग के बाद करेक्ट हो जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट?
स्मॉल पॉक्स के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब तो ह्यूमन में है ही नहीं ना वो, नहीं म्यूटेट नहीं हुए ना, उसको तो कंटेन कर दिया। म्यूटेट कहां होंगे, हमारी बॉडी में होंगे तभी तो होंगे। फॉर म्यूटेशन ऑल्सो द वायरस नीड टू बी इन आवर बॉडी ना, लाइफ एक्टिविटी तो शुरू करे वो, अब तो है ही नहीं कहीं पे। एनीवे, हाँ जी, प्रूफ रीडिंग का कुछ नहीं होता। दिस इज, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज गॉन नाउ, दिस इज गॉन, सो व्हाट विल हैपन, लाइक आई टोल्ड यू कि पहले हम पढ़ रहे थे TCA, अब हम पढ़ेंगे TAG। पहले हम पढ़ रहे थे इसको GGA, अब पढ़ेंगे GAT। सो इंटायर जीन हैज चेंज्ड। अर्लियर इट वाज मेकिंग प्रोटीन X, अब ये बना रहा है प्रोटीन Y। X was good प्रोटीन, Y इज हार्मफुल प्रोटीन। इमेजिन करो ये जो जीन है ना इंसुलिन बनाता है, एक गायब हो गया तो इंसुलिन नहीं बनेगा। पर्सन विल बिकम डायबिटीज टाइप 1, राइट? टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक भी हो सकता है। बट देन there is a mechanism when the cell is going to divide, a sperm and ovum is going to be produced. At that time there are certain enzymes which proofread the DNA, and because it has got guanine over here, तो guanine का पेयर किसके साथ बनता था? साइटोसिन के साथ, तो वापस में C आएगा, क्योंकि guanine के साथ C तो आ सकता है। सेल डिवीजन के टाइम पे होगा, only at the time of cell division, right? You get my point? Yes please. No. If both of them are gone, then the change is permanent now. I mean, it's a genetic disorder anymore. अब तो वो गड़बड़ है। बट जैसे मैंने कहा ना, म्यूटेशन होना ठीक है, होता है। अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है ना। अभी हमने पढ़ा 30,000 जीन्स, यू विल बी स्केयर्ड कि इतना तो हो ही रहा है, म्यूटेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी। It's not like that mutation will occur, then mutation will always be harmful. No. Because whatever DNA I'm having and you are having, only this 30,000 gene is only 25% of the DNA. बात समझ में आ रही है? तो अगर जीन 100% है ना, सॉरी DNA 100% है, तो उसका 25% जो एरिया है ना, वो DNA, वो जीन्स है। बाकी सब क्या है? खाली है कि नहीं? जैसे मान लो कि मैंने इस बोर्ड को मान लिया कि इट्स 100% DNA, एंड देन आई सेड दैट दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया, दिस एरिया आर 30,000 genes. This is only 25% of the entire board. 75% of the board is empty. Similarly, we have 100% DNA, only 25% DNA is 30,000 genes. 75% DNA is known as junk DNA. क्या कहते हैं उसको? जंक डीएनए, जिसका कोई काम नहीं बॉडी में। अब मैंने आपको दिया एक पत्थर का टुकड़ा और कहा आंख बंद करके मारो, तो जरूरी है कि उसी बॉक्स में लगेगा? चांसेस ज्यादा कहां है लगने के? जंक पे, बाहर में। तो पहले तो बाहर में लगता है। म्यूटेशन अकर्ड बट इट डिड नॉट इंटरफेयर द जीन्स, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए म्यूटेशन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, एक का पत्थर लग गया तो सी हटाया, बस only C came out, तो G will bring back C again. ठीक है, I got some suffering but next generation will be fine. किसी का लगेगा पत्थर, दोनों उड़ा दिया, but that is again chance, right? Everybody who get exposed to the radiation will not get the cancer. It all depend upon that how the thing is going on. We all know that smoking kills. Smoking, I mean, with every single puff of the smoke, I mean, cigarette, 300 such small patthar you are throwing. These are called carcinogens, right? The agent which can cause cancer. So, a normal cigarette will have 300 carcinogens. So, every time when you inhale, I mean, I know that none of you do it, right? Like every time somebody is doing it, so 300 such carcinogen are acting on our oral cells and pharyngeal cells and lung cells. वही हिट कर रहे हैं। बट अभी क्या है ना, ऑल द टाइम इट इज हिटिंग देयर, कहीं पे लग रहा है, राइट? अभी 30,000 जीन्स पे नहीं लग रहा है। अच्छा, कैंसर कैसे होगा ये भी सोचो। कैंसर नहीं होना नहीं है। कैंसर के लिए दो ही जीन है हमारे बॉडी में, एक का नाम है प्रोटोऑन्कोजीन, then there is called tumor suppressor gene, tumor
suppressor gene. I mean, you don't need to remember. That is gene number 1, gene number 2. That means there are 2 genes in everybody where the cancer can originate. First of all, you need to understand, proto-oncogene is such gene which is there to divide the cell. ये cell को divide कराता है. Cell division is a normal thing, right? I got a cut, cell will divide. If cell doesn't divide, how the cut and wound will be healed? A baby is growing, obviously cell division need to happen. A male or female is producing a sperm or ovum, cell division need to happen. Our WBC dying in 120, RBC is dying in 120 days. Cell division will bring back the new RBC. And for that matter, WBC2. लेकिन कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. WBC उतना ही बने जितना मरा है. 5,000 मरा, 5,000 बन गया. That is perfectly fine. 5,000 मरा और 5 लाख बन गया. That is leukemia. That is blood cancer. Because unnecessary you are making cell. That is why whenever we say cancer, then it is called tumor. Tumor क्या है? Tumor is hyper activity of cell division. So at this particular place, one cell lost the control over cell division, and now it is dividing 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, keeps on dividing. That is cancer. Cell division is a very good thing, but control of cell division should be there. Proto-oncogene is a gene. Oncology, you know that, study of cancer. It's proto-oncogene. That means it is responsible for cell division. But proto word अगर हट जाए ना इसका, तो that will become oncogene. It's a cancer gene now. A tumor suppressor gene is one such gene which keep control over the cell division. Right? Proto-oncogene is like a small child. A small child in a room filled with crockery and glasses. Imagine करो, एक रूम है, उसमें बहुत सारी क्रॉकरीज हैं, बहुत सारे ग्लासवेयर है, और एक छोटा बच्चा है, वो है प्रोटो-ऑन्कोजीन. तो छोटा बच्चा तो तोड़ेगा, एक हाथ तोड़ देता है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं तोड़ रहा है इसलिए क्योंकि एक पापा उसके या मम्मी उसकी बैठी हुई है. मम्मी पापा कौन है? ट्यूमर सप्रेसर जीन. तो प्रोटो-ऑन्कोजीन इज अ स्मॉल किड who has tendency to break the entire glasses and crockery of the house. But now this proto-oncogene is not acting because it is suppressed by the presence of parent sitting there. पेरेंट के रूप में कौन है? ट्यूमर सप्रेसर. अब दो कंडीशन हो सकता है, या तो पेरेंट चले जाए, पेरेंट चले गए, अब बच्चा अकेला ही है तो तोड़ देगा कैंसर, या फिर पेरेंट हो लेकिन बच्चा बड़ा हो जाए, तो बच्चा 5 साल का नहीं है, 15 साल का है, अब पेरेंट रोक नहीं सकते. एंड दिस ऑल विल हैपन ड्यू टू म्यूटेशन. सिगरेट पिया, एक कार्सिनोजन आया और एकदम से एक दिन कहां लगा? प्रोटो-ऑन्को पे. द मोमेंट इट हिट ऑनटू द प्रोटो-ऑन्को, इट कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन. दैट मींस प्रोटो-ऑन्को पहले बच्चा था, अब बड़ा हो गया. इट इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, सो नाउ इट्स कैंसर. अनदर थिंग, द नेक्स्ट टाइम और मे बी इन अदर केस प्रोटो-ऑन्को पे नहीं आया, ट्यूमर सप्रेसर को खत्म कर दिया. ट्यूमर सप्रेसर जीन बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एक्शन ऑफ द कार्सिनोजन. So the moment tumor suppressor gene become inactive, proto-oncogene will become active. क्योंकि अब तो पापा है नहीं, मम्मी है नहीं. So it is that probability. 30,000 genes में से उसी दो के ऊपर कहीं लगेगा, तब जाके कैंसर होगा. तो probability तो है ही ना. I mean, we all are having certain degree of possibility of developing cancer in our body. Because जरूरी नहीं कि उसके लिए स्मोकिंग किया ही जाए, दिल्ली में रहना भी काफी है. फॉर दैट मैटर पेस्टिसाइड लेडन जो हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा रहे हैं वो भी काफी है. I mean, that is linked to the cancer only, right? और प्लास्टिक के बोतल में हम पानी पी रहे हैं वो भी काफी है. हम मेलामाइन के प्लेट्स में खाना खा रहे हैं वो भी काफी है, राइट? मेलामाइन इज लाइक फेक क्रॉकरी. चीनी मिट्टी का तो हम यूज नहीं करते ना आजकल, हम एक प्लास्टिक टाइप का ही कोई बर्तन यूज करते हैं ना, मेलामाइन है वो. उसको जब गर्म करते हैं तो चिप माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स कम्स आउट एंड देन इट कैन हिट ऑन टू दैट. बट बचे हुए क्यों हैं? बिकॉज 2 जीन्स आउट ऑफ 30,000 एंड 30,000 इज अ पार्ट ऑफ 25% जीएनए. तो एक तो 100% जीएनए है, उस डीएनए का 25% 30,000 जीन है, उसमें से 2 जीन ये वाले हैं. तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन लक, पॉसिबिलिटी. बट देन देयर इज वन थिंग, अगर यही 2 जीन है एंड आई
लेट्स से इफ आई एम लिविंग इन दिल्ली, यू आर लिविंग इन दिल्ली, तो एवरी डे 10 स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन, चांसेस कम है. लेकिन somebody is स्मोकिंग, तो वो 300 स्टोन डेली मार रहा है, तो चांसेस कितने बढ़ गए? 30 टाइम्स बढ़ गए. इट्स जस्ट चांस, बट इट इज नॉट गारंटीड, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चेन स्मोकर हैं, थ्रू आउट द लाइफ दे एंड दे डाइड पीसफुली इन अ नेचुरल स्टेट. कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी मौत हुई. होता है ना कि बस चलते फिरते ऐसे ही, और पता चला कि वो इंसान 90 ईयर्स में मरा, लेकिन उसका रूममेट जो था ना, जो 2 साल उसके साथ रहा था पैसिव में, उसको कैंसर हुआ, वो मर गया 40 साल में, है ना? तो मामला वही है. मतलब मैं तो सब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये सब कुछ नहीं है. इंसान को अपने कर्म ठीक रखने चाहिए बस. यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, है ना? खैर, चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नाउ यू अंडरस्टैंड. अब next time when I talk about that informations are written onto the DNA, so you know how it is written, words and letters and genes, यही है. So genes क्या है? Sentences है. So one sentence is one gene, because sentence will have meaning. One change in the sentence, one omission of the letter will change the entire sentence, and we need to keep it intact, right? Anyway, let's quickly talk about RNA, because DNA पढ़ लिया, RNA में पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है. RNA is ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Again, the same thing is there, like it's raw material, right? Then we get what? Unit, and then we get what? Polymer. Now, RNA is polymer. We know that. RNA is what? It's polymer. And even RNA's monomer is nucleotide. क्या है ये? Nucleotide. ध्यान से देखो तो दोनों न्यूक्लिक एसिड ही तो है ना. इट्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. है तो न्यूक्लिक एसिड. केमिकली दे आर सेम, फंक्शनली दे आर डिफरेंट. सो केमिकल नेचर में दोनों सेम है, पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड, बट रॉ मटेरियल भी थोड़ा सा चेंज है. तो फर्स्ट रॉ मटेरियल दैट वी कैन हैव इज राइबोज शुगर, नॉट डीऑक्सीराइबोज शुगर. क्या है इसमें? राइबोज शुगर, C5H10O5. वहां पे क्या था? O4 था. That is why deoxy word was there. Here there is no deoxy word. Second raw material that we have is phosphate group. Phosphate group, the same one, no problem. Third is nitrogen bases. कितने type? Again 4 type. 4 types. But there is one difference. Adenine is same, guanine is same, cytosine is same. Thymine नहीं होता. Thymine की जगह पे क्या होता है? Uracil होता है. So what you will get at the place of thymine? Uracil. Adenine, guanine, cytosine same. Thymine will be absent. At the place of thymine, it will have uracil. है ना? तो बताओ RNA DNA में क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट डिफरेंस इज यूरासिल, L है, LL, yes. So first difference is uracil. Second difference is what? Ribose sugar. दो तो यहीं पे. And the third one is DNA is double stranded, RNA is single one. It has got just one. And then if we talk about this structure, यही था ना, तो इसको मिटाते हैं and then I'll show you that what can change over there. So RNA is just one strand, है ना? कितना है? सिंगल है. इधर वाला मिटा देंगे
तो जब एक तरफ का खत्म कर दिया तो क्या बच गया? एंड देन वी हैव टू डू वन मोर थिंग, जहां जहां पे थाइमिन है वो उसको यूरासिल में कन्वर्ट करना है. सो नाउ वी हैव टू पुट दिस इज यूरासिल एंड दिस इज ऑल्सो यूरासिल. नाउ इट्स व्हाट, ये सब भी हट जाएगा, आप समझ सकते हो, इट्स नॉट देयर. सो नाउ दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, RNA. Same thing. For the understanding only you are put. Now you see that if A go off, अगर A चला गया तो चला गया फिर. It's a new variant, right? That is why I told you that RNA is a simple structure, DNA is complex structure. On this earth, the first genetic material was RNA because simple will come first, but DNA has become the main genetic material because it is more stable. मतलब genetic material का काम ही क्या है? To carry the information. Right? And nature will select only those molecules which can carry information in a more secure manner. Who can carry information in secure manner? DNA or RNA? DNA, because it has got proofreading mechanism, template and sense strand, more protection. And that is how we are having the information in my body. The information that I got in my body, that my all functions are working proper, I got it from my parent. My parent got it from their parent. Their parent got it from their parent. तो डीएनए का इंफॉर्मेशन कितने सालों से चला रहा है? सोचो, लाखों साल से चला रहा है. And that is the unique feature of the DNA. It can hold information for a very long time. Yes, genetic disorder do happen. ये हुआ है. Hemophilia, color blindness, right? Different kind of disease that occur. But that is basically genetic disease. That is genetic error. Error है तो वो भी pass on होगा. Hemophilia is like if somebody has got blue eye can pass on to the next generation. Similarly, hemophilia is there in somebody, it can pass on to the next generation. तो जो अच्छा है उसको हम traits कहते हैं, जो बुरा है उसको हम disease कहते हैं. लेकिन है वो कहां पे? DNA पर ही है. So now this is RNA. Now we'll talk about one thing that is very important, that how this DNA RNA will function. मामला क्या है इसका? So every single information is written on where? DNA. So this is DNA. And DNA is basically, we can call it, unit of DNA is called what? Gene. तो आप gene भी bracket में लिख लो. And DNA pass this information to whom? RNA. So function of RNA is to take the command and order from DNA, and RNA goes to the ribosome and ribosome makes protein. तो अभी होता क्या है? देखो आप शुरू में चलते हैं, फिर वो मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी सेटअप. न्यूक्लियस इज बेसिकली व्हाट? न्यूक्लियस इज हैविंग DNA. तो अभी हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट स्लाइड अमंग द फर्स्ट वन, हियर वी टॉक्ड अबाउट, है ना? So this DNA has got all the information, adenine, guanine, cytosine, thymine. This information was passed on to what? RNA. RNA went to the ribosome. Ribosome is a machine. उस मशीन पे, उस मशीन ने पढ़ा कि DNA से क्या खबर आई है. And according to the information he got from the DNA, in the form of RNA, protein was made, and this protein is released. You get my point? So it's very simple. In the last class also I talked about that central dogma of biology is DNA to RNA. So DNA has got all the information. That information will pass on to RNA. RNA is a kind of, messenger. It's messenger RNA. उसको बोलते भी है messenger RNA. And this RNA will go to whom? A ribosome. A ribosome will make protein. Ribosome is a machine. Ribosome is making protein. But kind of protein ribosome will make, that will be commanded and decided by DNA. But DNA will never come to ribosome. CEO कहीं नहीं जाता. CEO किसको भेजता है? मैनेजर को भेजता है कि ये रखो कागज और ये लेके जाओ कहां? उस मशीन ऑपरेटर के पास. मशीन ऑपरेटर को बोलो कि इस फॉर्मूला के हिसाब से चीजें बनाए. यू गेट माय पॉइंट? सो दिस DNA to RNA is known as transcription. What we call it? Transcription. कल पढ़ा था ना इसको. And then RNA to protein is called translation. What we call it? Translation. So DNA to RNA, RNA to protein.
ट्रांसलेशन किधर होगा? राइबोसोम पर. Who will make protein? Ribosome. So who is making protein? Ribosome. So transcription is conversion of DNA's information onto RNA. That is called transcription. And translation is whatever information is written on the RNA will translate into product, and that will be made by ribosome. That is one thing. Second thing, there is something called reverse transcription. What we call it? Reverse transcription. So this is reverse transcription, and that will occur in retrovirus. Example कहाँ होगा इसका? कोरोना वायरस, रेट्रोवायरस. क्योंकि उनके पास क्या होता है? कल पढ़ा था हमने RNA, but they cannot command by RNA, right? So they simply have RNA, and the moment they get inside the cell, they convert RNA into DNA, और DNA से कमांड करते हैं फिर. तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कभी कभी होता है, रेयरली, राइट? इन वायरसेस इट कैन हैपन. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड replication. That means DNA to DNA. That is called replication. And replication will occur only at the time of cell division, right? Replication during cell division. I'll tell you. RNA can be anywhere. देखो RNA कहाँ होता है? पूछा RNA कहाँ होता है? तो RNA can be in nucleus, RNA can be in cytoplasm, RNA can be there with the ribosome. क्योंकि वो मैनेजर है ना, उसको पहले CO के चैम्बर में जाना है, उससे कमांड लेना है, फिर बाहर साइटोप्लाज्म में आना है, फिर राइबोसोम के पास जाना है. तो RNA कैन बी एनीवेयर. यू गेट मी पॉइंट? टेक्निकली सोच के देखो ना, अगर DNA को कमांड देना है और DNA बाहर नहीं आ सकता, तो अंदर कौन जाएगा? RNA जाएगा. और RNA अंदर जाके रुक तो नहीं जाएगा. CO के चैम्बर में देखते हो ना, रहने नहीं देते. बात खत्म, तुरंत बोलेंगे जाओ फिर अब, राइट? समटाइम आई मीन दैट्स अ रियल प्रॉब्लम. हमारे ऑफिस में कोई आ जाता है ना, कोई बैठ गया अगर मान लो, कहीं कहीं 40-40 मिनट बैठ जाते हैं लोग, और मैं कुछ नहीं बोल पाता. मतलब क्लास है तो दूसरी बात है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ क्या करूं अब. लेकिन समटाइम आई गो टू द बिग शॉट्स, एक आध मिल जाते हैं कभी कभी, वो तो सीधा ऐसे हाथ बढ़ा देते हैं, ओके सो यू गेट अ सिग्नल कि अब चलना है. बिकॉज बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग तो भाई चलो ठीक है, 40 मिनट टाइम पास भी तो हो गया है ना. So I'll explain once. This yellow part is a main part that we should take care of. We'll talk about that in a coming time also. Transcription, translation. Sometime RNA can convert and can make DNA. Right? जैसे आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, RT-PCR. सुना है? RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. Right? This all will come. Don't worry. We are basically building what? Background. है ना? ऐसा नहीं है कि एकदम से आप किसी दिन एकदम से न्यूज़पेपर निकालोगे, उसमें एक न्यूज आएगा, पढ़ के सिमुलेट कर लोगे. नहीं, आप नहीं कर पाओगे. आप क्या करोगे? न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन निकालोगे सिर्फ, क्योंकि बैकग्राउंड आपकी नहीं है. आपकी बायोलॉजी है तो बैकग्राउंड है, बट अगर बायोलॉजी आपका नहीं है तो बैकग्राउंड नहीं है. तो दैट न्यूज विल नॉट मेक सेंस टू यू बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बैकग्राउंड. तो हम क्या करते हैं? हम अंडरलाइन दो तरीके से करते हैं. नॉर्मली अंडरलाइन करने में नए लोग दो तरीके से करते हैं. जो समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन करते हैं, या जो समझ में आ गया उसको अंडरलाइन करते हैं. होना यह चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन होना चाहिए ना. करते हैं कि नहीं? बताओ, आप ध्यान से देखो. एक समझ में आ गया, कर दिया अंडरलाइन, ये आया. अब जो आपको समझ में आया वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है ये तो नहीं पता आपको. और दूसरा होता है कि जो आया उसको छोड़ दिया, जो नहीं समझ में आया उसको अंडरलाइन कर दिया. कुछ कुछ तो दोनों ही करते हैं. एक आध तो कॉपी लेके किताब लेके आता है, मैंने छोड़ा क्यों. मैं कहता हूं कि तुम एक काम करो, जो अगली बार से जो छोड़ रखा है ना उसी को अंडरलाइन करना. ब्रेन की वायरिंग ठीक कर लो कि जो अंडरलाइन है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा ही कॉपी अंडरलाइन, कुछ छोड़ा ही नहीं. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RT-PCR, बिकॉज वंस वी किसी को स्वैब लगाया आपने एंड वी गॉट द सैंपल. इन द सैंपल देयर इज coronavirus. Coronavirus has got RNA.
टेस्टिंग मैकेनिज्म हमारे किसकी तरफ टिल्टेड है? डीएनए की तरफ। तो हम क्या करते हैं? वी कंपेल दिस आरएनए टू कन्वर्ट इनटू डीएनए, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन वी टेस्ट इट। वायरस भी यही काम करता है। हमारे बॉडी में आरएनए कमांड थोड़े ना ले सकता है। यू गेट मी पॉइंट? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा सेल भी इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि जब यूरासिल है, यूरासिल इज रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? थाइमिन। तो यूरासिल के सामने वो क्या लेके आएगा? एडेनिन। इट विल कंसीडर यूरासिल एज थाइमिन। नहीं, यूरासिल टी के बदले में क्या था बताओ? टी के बदले में यू था ना। तो अब टी हो चाहे यू हो, सामने क्या आएगा? ए आएगा। यू गॉट इट? आएगा तो यही, अगर आता तो, है ना। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एनीवे। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट इवन द coronavirus does the same thing, but it enter in our body, it is RNA virus, so RNA हमारे बॉडी को कमांड में नहीं ले सकता, तो RNA converts into DNA and that DNA take command on our cell, so that is reverse transcription, only occur when there is a retrovirus. Last one is that replication, when the cell is going to divide, in one cell there is 30,000 genes, but cell is going to divide into two, तो सबको 30,000 मिलने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा 15,000 नो। Each and every cell is having the same set of DNA that we got from our father and mother. It means that when the cell is going to divide, it makes its copy. DNA की दो कॉपी बन जाती है, एक कॉपी एक सेल के पास रह जाता है, दूसरा दूसरे के पास चला जाता है। तो replication will occur only at the time of cell division. Reverse transcription will occur in the case of retrovirus when you are dealing with that. And transcription and translation will occur throughout the life when there is certain enzyme need to meet, सर्टेन प्रोडक्ट नीड टू मेक। अगर मैं जिमिंग कर रहा हूं और प्रोटीन खा रहा हूं, मसल बना रहा हूं, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन तो बनना चाहिए ना। हाउ द प्रोटीन विल मेट? डीएनए विल गिव कमांड एंड आरएनए विल टेक दिस कमांड टू राइबोसोम, राइबोसोम विल मेक प्रोटीन। कल मैंने कहा था डीएनए इज ब्लूप्रिंट, आरएनए इज वर्कर एंड प्रोटीन इज ए स्ट्रक्चर, है ना। अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट था तो वो डीएनए था। इस बिल्डिंग को बनाने में जितने लोगों ने काम किया, जितनी मशीनें काम की, वो सब क्या थे? आरएनए थे। और जो बिल्डिंग बन के रेडी हुआ वो क्या है? प्रोटीन है। सो दिस इज बिल्डिंग, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दिस बिल्डिंग हैज बीन मेड बाय आरएनए, बट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय डीएनए। आपको एक और बात बताता हूं, एडिशनल जान लो कि जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ व्हाट? आरएनए। नो, आरएनए प्लस प्रोटीन। ये भी आरएनए ही है। आरएनए तीन टाइप के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरी मैसेज, ट्रांसफर आरएनए कैरी रॉ मटेरियल एंड राइबोसोमल आरएनए बनाता है। बिल्डिंग बनाने में कितने लोग चाहिए थे? एक चाहिए था आर्किटेक्ट जो आके विजिट करेगा बार बार, क्योंकि उसी के पास ब्लूप्रिंट का कॉपी है, वो है मैसेंजर आरएनए। यू गेट माय पॉइंट? फिर एक होता है कौन? जो मजदूर होते हैं, जो बेसिकली सप्लाई लेके आते हैं, सीमेंट लाओ, ईंट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो ट्रांसफर आरएनए। और फिर एक होता है जिसको कहते हैं जो बिल्डिंग बनाता है, वो कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। यू गेट माय पॉइंट? सो इवन इन बिल्डिंग मेकिंग देयर आर लॉट ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रॉ मटेरियल, देन देयर आर few मेसॉन आर रिक्वायर्ड जो अपने हाथों से दीवार को बनाते, एंड वन और टू आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड which one is having copy of the blueprint. Similarly RNA of different type, but उसमें जाने की जरूरत नहीं है. So that is all for today, and tomorrow when we'll meet we'll start biotechnology, genomics will start the first chapter. कुछ पूछना है तो मैं हूं, I'm already there.